all good, set to start? Okay. So after completing 2 chapters, we'll be taking a break of 5 to 10 minutes. Okay. All right. So I'm sharing my screen. Just let me know if it is visible. So screen is visible, supply chain management. Yes, ma'am. Yes. Okay, fine, fine. So see, the name of our subject is supply chain management, which means we want to manage the supply chain of an organization. Okay. So supply chain means all the elements or the parties or the components which are engaged in providing the raw material to the company from the supplier and back to the whole process to finalization of the goods to the end consumer. Okay. So basically, the management of this chain involves having the oversight of the materials, of all the informations, the finances, as they move from the supplier to the manufacturer to the wholesaler, back to the retailer, and finally to the consumer. Okay. That means here we'll be talking about managing of what we want to manage. We want to manage all the parties involved here in the supply chain. We want to have the oversight. Oversight means to look, means to have the overlook of everything, right from material. How much is the material? Where is the material? Where it is lying, and the moving time, and all these things. To the information being shared, to the finances, means the cost related things. We want to take account of the cost also. The cost should be lower and the profit should be maximized. We want to take care of that also. The supply chain manager wants to manage that also. Okay. He wants to manage the finances as well. Right from Ma'am, PPT is not showing first. just 1 second. So if anyone wants to join, they can join by themselves. I do not have to admit them. Right. Balagopal. Because in between, if I admit, then also will be disturbed. Okay. So I guess now the screen must be visible. Hello?
Ma'am, It is? screen is visible, Screen but is visible. PPT is not showing to us. PPT is not visible. Okay. So I'll share, stop sharing and I'll share again. So it's better if everyone joins within the given time. So I've shared the screen again. It must be visible. No, ma'am. Not yet. It's not No, yet No. visible. no, ma'am. Okay. So I'm closing the file again. Sharing the screen again. So first of all, I forgot sharing this syllabus. So I usually start with sharing of the syllabus. We discuss on the syllabus. Just first thing, just let me know if it is visible. The syllabus is visible to you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So see, this is the syllabus of our supply chain management. We have discussed this many times, but still, when you are starting, I've always told you, please check on with the syllabus. Don't spare your time. This is a precious time. Don't spare your time here and there reading anything that is not required. Just see your syllabus, stick to your syllabus, and for this time at least, be very stick to your syllabus and read whatever is demanded as per your syllabus, right? So see the syllabus. Here we have 9 units. Unit number 1 is about the overview of supply chain management. With this, we'll be starting with the meaning and definition and importance and scope of supply chain management. Then we'll be discussing on the inventory, how the inventory is being managed in the supply chain. Then we'll be discussing the risk and uncertainties involved in the supply chain. Then we'll be studying what is the transportation in the supply chain and what is the transportation network and how is the routing being done. Then we'll be studying the coordination, how the bullwhip effect is being made, and the how can we mitigate that, and all these strategies we will be studying and discussing. Then we'll be discussing on the sourcing of the supply chain. Okay. And next will be the importance of analytics in supply chain and how the big data analytics in supply chain can leverage the supply chain, and what are the various tools available. Once we come to the till this unit number 7, we'll be going for unit number 8, which talks about the reverse logistic. Reverse logistic means how the reverse logistic is being managed, means how the goods that you are replacing or returning is being managed by the organization. Finally, we'll be discussing the challenges and opportunities that is available in managing of this supply chain supply chain. Okay. So these are the 9 units that we have to study. And also we have discussed that this supply chain analytics, this is nothing but the extended form of supply chain management. Okay. So it is very important for you to please understand supply chain management. Then only you will be able to better understand supply chain analytics. So these are the 9 units that we'll be discussing. Okay. So here is the PPT that I was sharing. So this was the PPT we were sharing, and I guess now it is visible to you. No, ma'am. Why? Your screen It is is stuck still. on the syllabus, ma'am. Sorry? Yes. PPT is stuck in syllabus. PPT is stuck in syllabus. Syllabus have closed.
Syllabus I have already closed. It's not there on the screen. I guess the screen may be responding slow. What can you see now? Nothing, ma'am. PPT is closed. PPT is? PPT is closed. Achha, PPT is closed. But on my screen, PPT is here. So I'm closing again, will be opening. I'm closing all the files opened here. Refreshing the screen. Now I'm opening again the files. And here I've opened the PPT file again. PPT slide is visible to you. No, No, ma'am. ma'am. It is not showing anything. So yeah, anything. I think there is network issue. Just one thing. Let me share the screen again. Yeah. I guess now it will be visible. Now it is visible, ma'am. Visible. Okay, thank you. Yeah. So now it is visible even in between if there is any breakage in my voice or if the screen is not visible, let me know then and there itself. Okay, interrupt me then and there itself and we'll reshare or whatever is required, we'll be doing that. Okay. So I was just discussing ki what is our purpose for this paper? Why we are studying this paper? And what can we do by studying this paper? So I discussed that supply chain management is all about managing of the supply chain. Okay, so here our manager is there who will be called as supply chain manager, and his task is to have an oversight of the materials, of all the information, of the finances, right from the material when they are moving from the supplier to the wholesaler to the retailer to the end consumer. Okay, so supply chain manager, he integrates the supply and demand management within and across the companies. What is his task? The supply chain manager, his task is to integrate means, what does the word integrate means? Collaborative. Integrate means सारी हाँ, activities को एक साथ लेके चले. हाँ एक साथ लेके means there is no loophole है ना, everything is being integrated, everything is being coordinated. Okay, so supply chain manager, he coordinates uh, with all the supply and demand and the management of these. Okay, forecasting the demand and also meeting with the supply. Okay, across the companies, across all the departments. Okay, so what is the goal of supply chain manager? Supply chain, what is the goal of supply chain manager? His goal is to first of all to have efficiency means to have an efficient management, means to minimize the cost and to optimize the resources, to use the resources to the best possible. Okay, then to speed up the process. Speed up the process means ensuring that the product and services, they are delivered at very smooth, delivered smoothly also, and delivered uh, within the given time. Okay, to meet the customer demand, right? Also, the goal of the supply chain management is to have a reliable production and to come up with the delivery schedule, to stand by the delivery schedules. Okay, so that the supply chain
integrity can be maintained. Okay. Next is he also wants to be manage his supply chain in such a way that it is flexible enough to adapt to any problem that may come in the future. Okay. Or to uh, change itself with the demand of the market without disrupting the whole supply chain. So the supply chain manager wants the system, the process to be flexible enough so that it can change itself with the changing demand. Okay. Also, the last but not the least, we will always be discussing about the sustainability. It's not just that we have to like have a smooth and this type of supply chain. We also want to have a sustainable supply chain. Okay, we don't want to disturb the environment, the society, or we don't want any carbon okay carbon emission. We want the supply chain to be sustainable and to manage it in such a way that it takes care of the environment, the social and the economic impacts. Okay. So this is also the goal of the supply chain manager, that the transportation mode or the raw material that is being used, the process that is being done, it should be sustainable enough that it takes care of the environment along with the organization. Okay. So with this goal, we will be starting the paper that when you are studying this paper, you are what, you are a supply chain manager, and now it is your task to have a sustainable supply chain. Okay. So as a supply chain manager, you have these goals that you want to be to like have an efficient system, to have a flexible system, to have sustainability in your process. Okay. And what are the components of supply chain manager? Okay. So what are the key components of supply chain management? Key component is first, his task is to plan. To plan about what? To plan the strategy, to plan or to determine the strategic approaches to the supply chain management. Okay. Hello, ma'am. Next is sourcing. Sourcing means, sorry. मैम So पीपीटी आई थिंक चल नहीं रही सही से अभी हमें व्हाट इज सप्लाई चेन शो हो रहा है okay. So I have not included these in supply chain in this slide. Reason being, I'm just trying to tell you now that what like when you are studying the supply chain manager, if you are the supply chain manager, then what is your goal and what are your components and how you should see yourself. Then we'll be discussing ki, what is the process. Okay. So right now we are just trying to frame up ourselves. Okay. So don't worry, this is a slide where we'll be discussing what is supply chain. All right. ओके So before this, I have just discussed the goals. If you are the supply chain manager, then what should be your goals? And next I'm discussing the components of the supply chain management. Components means what will be your actions. The first thing will be to plan. You want to plan the strategic approaches to manage these chains. Okay. Then sourcing means from where to take up the goods and services, and means basically to selecting the supplier is the second component of the supply chain manager. Then manufacturing the products and testing them for quality, and all these are the key component of supply chain management. Okay, that means planning, sourcing, you can say testing them for quality, then delivery, that is logistic, and the last is returning. Okay, that means handling of the return defect. So these are the 5 components of supply chain manager management. Okay. So we have discussed the 5 components of supply chain manager. The first one was
Planning of what? Planning of the planning how to approach to the supply chain management. Then sourcing means selecting the suppliers. Making means manufacturing of the product and testing the quality. Then delivering means talking about the logistic, and then returning. So these are the key 5 components of the supply chain management. Okay. Now we'll be discussing the basic of what is supply chain. What do we mean by supply chain? Okay. So supply chain, it basically involves all the stages directly or indirectly in fulfilling a customer request. So all those who are involved directly or indirectly in fulfilling the customer request will automatically fall into the chain of this supply of the organization. So this basically includes the manufacturers, the suppliers, transporters, warehouses, retailers, and ultimately to the consumers. So this is what is known as supply chain. Okay. And managing all these components or managing all these parties is what is known as supply chain management. Okay. So we want an integrated system where all these parties should be integrated and the information should be shared in such a way that it ultimately leads to a smooth supply chain. Okay. So we want to integrate the demand and supply. Okay. Within each company, the supply chain, it basically had the function of fulfilling a customer request. It is the ultimate goal. The ultimate goal is to fulfill the customer request. And what are the processes that is done in between is the product development, the operations, the distribution, the finances, and the customer service. Okay, till the feedback. Even the feedback is being included in the supply chain management. Okay. So all these are the processes who are involved. Thus, the supply chain management is all about strategically coordinating all the functions and stages to maximize the customer value to gain a competitive advantage in the marketplace. Okay, so this is the goal of the supply chain management. And having effective supply chain management, it can lead to reduction of the cost. How the cost will be reduced? Because if you have an integrated or if you have an effective or efficient supply chain, then how the cost will be reduced? The cost will be reduced because there will be an optimum process. There will be no loss of good. There will be no overstocking, understocking, and all these can be eliminated, and thus the cost will automatically reduce. So this is the result of having an effective supply chain management, that the cost can be reduced. Also, there will be increase in the efficiency, the quality may be improved, and thus it will lead to enhancement of the customer satisfaction. And you know, if the customer satisfaction is if the customer is properly satisfied, then that can give a good name to the company, and it can have a competitive edge with that. Okay. And thus it can have a good profit. So supply chain is all about all the elements and parties who are involved in fulfilling the customer's request. This may be the supplier, manufacturer, transporters, warehouses, retailers, and consumers. And the goal is to integrate the demand and supply. Okay. And if one has an efficient supply chain management, then that can reduce the cost and improve the quality, and thus lead to the enhancement of the customer satisfaction. So class, I request you, if you get a question on supply chain, do write all these points that we have discussed. You have to write what is the meaning of the supply chain, who are the parties involved, how it can be done, what is the process being there, and what is all about supply chain management. And if there is an efficient management, then what can be the results. Okay.
Okay. See, the term supply chain, it imply a linear one-way sequence. So here we'll be discussing, in this slide, we'll be discussing what are the networks that are available here and the networks that is being followed in the supply chain management. So if you just see the word supply chain, then you may get an idea that it is a linear way. Linear means one which goes in a way, in single way, है ना? Which has one direction. Okay. So it shows that the supply chain may be a linear one-way sequence of product delivery, right? That there is one manufacturer, a retailer, and the consumer. The product goes from here to here and ultimately to here. So it is a linear way. But in the modern supply chain, okay, in the modern supply chain, this chain is not as linear as it seems or as it was earlier being used. Now it is much more complex and interactive. Okay. Now it is much more complex. There are many other networks, many other parties who are involved, and these are they are integrated among themselves. Okay. So there are many manufacturers involved, there are many distributors involved. Okay. And the system is not so linear as it was. So we know that customer, he is the integral part of the supply chain. So yeah, we'll be discussing about the supply network and supply web. In the coming slides, we'll be discussing about all these networks and web. So earlier this chain seems to be a linear one, but now with the modern supply chain and with the e-commerce companies and these m-commerce companies, this network has become so complex and so interactive that it is creating a proper web. वेब कैसा होता है? वेब क्या होता है? जाला होता है. वो कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा सा, बिल्कुल it is properly integrated and means उसमें you will not be able to understand from where it has started and where it is going, है ना? वेब का मतलब तो वही होता है. तो this is what is being told, that now the supply chain has become web like structure. Okay. It is not just the simple one from manufacturer to the customer. Okay. So it basically includes movement of product from supplier to the manufacturer to the distributor, but also include movement of information, funds, and products in both the directions. Okay. So the modern supply chain, it includes movement of information, funds, and products in both the directions. Okay. So supply network or supply web, what we mean by this? Supply network or supply web. See, when we have the network, which is a complex, which is not only includes the materials or the distributions, but also it includes the information, the flow of goods, the flow of funds. Okay. So it becomes multi-directional. Now the modern supply chain, it is multi-directional, where the flow of goods is there, the information and the funds and the and the funds is being involved there. So it is nothing but the multiple interconnected partners. So there are multiple interconnected partners who are forming this supply network or supply web. They are more accurate. These e-commerce company, Flipkart and all, their network, their supply chain is so complex. It is just like a web. It
it has a multi-dimensional flow of goods and services. It has complex information flowing at the real time. Okay, the fund sharing is shown transparently, and also there are multiple interconnected partners who are working together in an integrated way, and they are often more accurate as they are being uh, managed with the help of these AI tools. Okay, so now this supply chain, the modern supply chain, the e-commerce supply chain, they are multi-directional and are just like forming just like a web. Okay, so they are not linear, they are non-linear, they are interconnected, they are multi-directional. Okay, they are very dynamic in nature, and each and what is node means एक छोर से दूसरे छोर को जो कनेक्ट करता है ना उसको नोड कहते हैं. So this, if we talk about this P and Q, then these ये this जो किनारा है ना, this is the node. Okay, so all these nodes in this network can be connected to multiple nodes. Earlier this was the supply chain, but now this has become web like structure where there are many multiple parties involved and they are interconnected. Okay, so all nodes are interconnected. Okay, to multiple other nodes representing, and what does this P and Q representing? The P and Q may be representing the manufacturer, the supplier, the retailer, or the consumer. Okay, so there are many parties involved. Okay, and all of these nodes, they are nothing but the suppliers, the manufacturers, distributors, retailers, and customers. And decisions made by one entity may affect the other. You agree with this? Yes, because if there is any delay from the manufacturer side, then the whole supply chain may be disturbed, and thus the decision by one of the party may affect the other. Also, the performance of the entire system is only as strong as its weakest link. What does this mean? That the performance of one is also being affected by the other. So in this complex supply chain, it has to be managed and it has to be performed well, because it does not come uh, in isolation, rather it comes as a whole. The performance of the supply of one supply chain may reflect or may have to be integrated in such a way that it reflects the whole supply chain, and it has to be very strong, because if there is any problem or issue with any of the node, then it can disturb the whole supply chain, and thus the performance may be weakened. Okay, so collaboration and coordination among all the parties are essential. So collaboration means you come with the other party and agree on some terms to work together. That is what is known as collaboration. Okay, and coordination means you follow one another. Okay, the instructions are made so properly and it is in such a integrated in such a way that one leads to other. Okay, so here it is saying that if you want to have a good supply chain management, then the parties need to collaborate among themselves, or the party may need to coordinate, because then only they can be able to perform well and have a strong supply chain, because they are so interconnected that they all depend on each other and they all influence each other. Okay, so collaboration and coordination among all the parties are essential for the overall effectiveness and efficiency of the supply chain. Okay, so a supply chain network, or let us call it a web, can be responsive, it can be flexible, it can be resilient. Okay, it should be responsive, it should be flexible,
Okay, it should be resilient to changes and disruption. So if there is any change and disruption or change in the market demand, then these supply chain should be flexible enough and resilient enough to accept the change and come up with the required changes. Okay, it should not be rigid, because if the supply chain is rigid, then it cannot be able to meet up with the dynamic market demand, because the consumers, they are very their taste and preference changes in a while, so they are very dynamic. Okay, so the fashion goes it changes very fastly. Okay, so it is required that the supply chain parties, they should be integrated, they should coordinate, they should collaborate in such a way that if there is any change in the demand of the consumer, okay, so if the consumer is changing its demand, then the retailer or the distributor or the manufacturer, they should be able to change their products and come up with what the consumer is demanding, right? So that is what it is saying, that this web should be responsive means it should be it should work in response to the market demand. Okay, and it should be flexible and resilient. Okay, so by considering the supply chain as a network of web, companies can implement strategies that optimize the entire system rather than just individual component of the supply chain. Okay, so the whole of the web should work as an entire system that will lead to improved service level, reduction in the cost, and enhance the competitiveness in the market. Okay, then only the services can be enhanced and cost can be reduced, and the company can uh, have an competitive edge in the market, right? So this is all about the supply chain web, why it is required and how it should be made, and what should be the strategies being done to make it more stronger, at the same time let it be flexible and responsive, right? Stronger in the sense that they are properly collaborated and coordinated, they are able to coordinate among all the parties. Okay, and flexible in the sense that they should be able to respond to the changing market demand. Okay, so the next slide, this slide is just showing the different types of supply chains. Okay, so this is the generic supply chain. Generic means the normal that was being used in the earlier times, the normal supply chain. So normally, if you see the first case number one, so case number one is manufacturer, wholesaler, retailer, and customer. So there are these 3 to 4 parties involved. There are many companies who follow this type of chain, who have the manufacturer, wholesaler, retailer, and customer as the supply chain. Yet there are few companies which do not involve wholesaler in their chain. They directly move the goods from the manufacturer to the retailer to the consumer. Yet there are few companies who are not also maintaining the retailer, but directly providing the goods to the ultimate consumers. Okay, right? So these are the various generic types of supply chain. But then we have discussed that now we have a modern supply chain where the chain is not linear, they are multi-directional, and all the nodes are interconnected with each other. Okay, they don't act in individual. Okay, so that those networks have not been shown because they just form like a web where all the parties are interconnected to each other. Okay, so those networks have not been shown. This is just the generic supply chain that is being shown here in the PPT. Okay, next. So we just now discussed that that those three were the generic supply chains which were designed to meet the specific business. Specific business means there are few companies, like we discussed the Dell or this company, which do not involve any middleman into their chain. They directly provide the good from the manufacturer to the customer. So it is based on the specific business needs that the
supply chain can be made. Okay, so it is based on the business need and the industry needs that these types of supply chain is being designed. Okay, so this is all the discussion about the generic only. There are continuous flow supply chain, there are fast chain supply chain, the efficient supply chain, custom configured supply, agile supply chain, okay, flexible supply chain. So these were the various generic types of supply chain which were mixed and matched to create hybrid supply chains that suit the particular business. Okay, so a company, they can have a continuous flow supply chain along with the agile supply chain. Agile supply chain means the supply chain which is more based on the concept of JIT, just in time. The supply chains which are more based on the concept of just in time. Okay, so those supply chains, they what they do, they keep the parties collaborated, and they work in such a way that they postpone the production for the last minute, postpone the finalization, you can say, postpone the finalization of the goods for the last minute, and and they produce they supply the good only when the consumer demands. Okay, so this is all the discussion about the generic supply chain. So this is just the example I have taken. See here, Procter and Gamble and other manufacturer, these are the manufacturer who are uh, connected to the third party DC. Then this is being connected to the supermarket, which is the retailer, then is going directly to the customer. So you can see here, it is starting from here. The supply chain is starting from here. The supply chain is starting right from the timber industry, है ना. timber industry क्या होता है, वो लकड़ी का जो होता है ना. तो it is तो you can just, this example is just to make you understand कि बिग बाजार जो कि एक रिटेलर है, तो बिग बाजार जो कि एक एफएमसीजी सुपरमार्केट है, उसका जो आपका रॉ मटेरियल, उसका जो आपका सप्लाई चेन के जो फर्स्ट इनिशिएटिव्स, जो फर्स्ट पार्टी जो है, वो it can be a timber industry as well. This is the reason of taking this example, to make you understand that the big bazaar, which is a supermarket, has its supplier as has its supply chain partner as timber industry. Then this timber industry is giving this to the paper manufacturer. The paper manufacturer is producing the paper from the timber, then is giving to the chemical manufacturer, then is giving to the plastic producer, the tenpo packing, with the paper, the packing is being done, and the chemical manufacturer like oil company. Okay, so all these are giving to the P&G, Procter and Gamble and other manufacturers who are manufacturing the raw material, then is giving to the distributors. Okay, then is given to the retailers, and then is to the consumer. So you can just imagine कि even the company which is a supermarket or which is an FMCG company has its party as the timber industry or the chemical manufacturer or the paper manufacturer are the supply chains of this particular company. Okay, so my idea is just to let you know that the supply chain is actually very lengthy, and it starts right from the raw material to all the parties moving in to providing the goods to the ultimate consumer, and here is the customer. Okay, so you can just see that there are so many nodes connected to each other, and is thus forming this supply chain. Okay, so next here we'll be discussing how in the modern supply chain we also include the information, the product, and the fund
in the supply chain. We just don't include the elements, we also include elements means the parties. We just don't include only the parties in the supply chain, rather we have the this also, the information, the product and the fund also included in the supply chain, and it is the duty of the supply chain manager to manage all these also, along with managing of the element parties, along with managing of the logistic and everything. The the responsibility of the modern supply chain manager is to manage the information between all these parties, manage the products between all these parties, and also manage the fund between these parties. Also, in your syllabus, I've seen just these three being included in the modern supply chain. However, in few books, I came to know about the knowledge flow also. So, knowledge flow may be included in the information only. Okay. So, either you can talk about these four things that is being included in the modern supply chain, or you may include these three, because knowledge flow is a part of the information only. You know the difference between information and knowledge? Information means all those that is available, all the data that is available to you, right? फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स है ना, बट उससे आपको नॉलेज कितनी हो रही है, मतलब उससे आपको ज्ञान कितना हो रहा है, समझ कितने पा रहे हो, दैट इज नॉलेज. तो इंफॉर्मेशन एक बड़ा स्क्वायर है और उसके अंदर जो छोटा स्क्वायर है वो है नॉलेज. ठीक है, तो मैनेजिंग ऑफ दोज इंफॉर्मेशन. और क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन? वी आर टॉकिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन बिकॉज nowadays the world is working with data, everything is working with data, and thus the supply chain is also being integrated with the data, and thus we want to talk about the modern. When we are talking about the modern supply chain, we are talking about the information also. Okay, so modern supply chain may, along with the management of all those party, information, product, and funds are also being managed by the supply chain manager. Okay, so see, okay, so these are also becoming an element and is connecting from one node to the other. And here, if you talk about the information, then in information, all the datas are being shared between all the parties. Like for example, okay, like for example, yeah, like for example, the data related to the inventory means how much inventory is being maintained in the particular warehouse is being shared by the manufacturer, is being shared to the distributors as well. Okay, same with the funds and same with the product. Okay, so here I have given the example of LPG gas cylinder. The flow of information is independent and the flow of product is inversely related to funds. So basically it means the flow of information, it is independent, it is being shared independently, while the flow of product, it is inversely related to fund, means the flow of product and fund, they're like if the product increases then the fund automatically goes down, so it is negatively correlated, is being discussed here. Okay, so now what is the objective of supply chain? We have almost discussed this several times, that the objective of supply chain is to create value for the customers, to satisfy our customer. Okay, we want to satisfy our customer by delivering them on time within the given schedule. We want to provide them quality product. We want to provide the products with the least cost possible. Okay, so to create the value is the overall objective of the supply chain. So supply chain value means that the final product should be worth to the customer that he is paying. The customer should be satisfied. Okay, and you know, if the customer will be satisfied, then the
company will be able to make profit. Okay. Thus, if the value is correlated to the profitability also. Okay. So how value is being added throughout the supply? We have discussed that the components, while discussing the components of supply chain, we have discussed this, that the sourcing of materials means selecting the suppliers. Okay. Manufacturing and production efficiency, the product design and development, packaging, logistics. So all these are the tasks of the supply chain manager. He has to manage with the sourcing of material. He has to manage with the manufacturing and production efficiency, the product design and development, the packaging, the logistic and distribution, the marketing and sales, and after sales services, also the feedbacks. So all these should be managed well by the supply chain, and then only they can create value to the supply chain. Okay. So each of the player means all the parties involved. So each of the parties should be aware of their roles and should work accordingly. Okay. See, so how the value addition is done in supply chain? So you know this is the tier 3 supplier. This is tier 2 supplier. Tier 1 supplier means this may be the raw material provider, manufacturer. Okay. So before the manufacturer, here is the manufacturer. So before the manufacturer, all those parties who are involved in providing up with the raw material, they can be there can be many suppliers. So all these are the suppliers. So these suppliers, they are providing the value addition in processing and manufacturing activities. Then from the manufacturer, it goes to the wholesaler, to the retailer, and to the customers. So value is added here by marketing and logistic. Here the value will be added through marketing and logistic, wholesaler and retailer. And here the value will be added by processing and manufacturing activities. Okay. Okay, so what is the objective of supply chain? We have discussed this. The objective is to maximize the profit. Here we have taken a case study of Micromax where we have discussed how it is able to maximize the profit in a supply chain. Okay. So there is a system known as CPFR. CPFR is nothing but a collaborative planning, forecasting, and replacement. Okay, so this many a times companies, they do follow CPFR, means they are collaboratively planning between all the parties, they are forecasting and then providing the replacement activity also to integrate the supply chain practices. Okay, so this is being followed by Micromax, which is an mobile phone company, which is also following this supply chain management technique, which is known as collaborative planning, forecasting, and replacement. So, and thus it is gaining profit. So this case study is about that only. Next, how the supply chain has evolved. So it started the first revolution. It began in 20th century. Okay, it began in 20th century. And the first case that we discussed was about the Ford supply chain. We discussed how the what was the Ford strategies. Firstly, we discussed what was the challenge and what was the problem of the Ford. Okay, and then we discussed how it came up with the solution and what are the strategies it applied. So Ford was the first company that brought revolution in the whole supply chain management. Okay, what it did is it based its supply chain on economies of scale. Although it produced only one model, but it was able to produce in a very smooth way and in a very time scheduled way. Okay, so this was the case study which we discussed exhaustively in our class.
The second revolution, it came in 1960s, and this was the Toyota supply chain case study, where we discussed how the Toyota, which is in Japan basically, which is in the most disaster which is most prone to disaster area, and how it is able to manage up with uh, the situation, and how it has been able to come up with the many models, and it came up with a very flexible model having many designs and still able to meet the customer demand. Okay, so Toyota's case study was discussed, and we also discussed how it has like it based its model on the just in time and Six Sigma, and how what was its strategy and how it came up with that. Okay, then the third revolution was the Dell supply chain. Here we discussed how the Dell managed its supply chain to provide the customers with the tailor-made or the customized PCs, right? So here we discussed how they work with the postponement strategy and all. So these are the three revolutions that was discussed with you in the class. Okay, now is what are the challenges? The challenges, you know, what is the challenge, the basic challenges of supply chain? So the basic challenge of supply chain is of the integration, is of the synchronization, है ना? दो parties को synchronize करना या दो party को coordinate करना is not a small thing, because they each party have their own functionality, each party has its own way of working. Okay, so synchronization or coordination between these parties, between the planning and the execution, is the main challenge. Next is still, although we have now developed with the data, but still there is some issue with the data. There are few data that are not available at the real time. And we have also discussed that in India, we don't have a proper infrastructure, we don't have enough resource persons to do the data analysis and all these things. And thus, this may be one issue with the management of the supply chain. Also, irregular review of safety stock. The safety stock or the buffer stock is not regularly or properly maintained. Okay, there is lack of flexibility in the network and distribution. The network we discussed, at times it is not responsive, it is not very flexible enough to come up with the changing customers demand. Okay, also the price volatility is also a big problem, because uh, there is continuous change in the price because of the rigidity of some of the parties. Okay, also there may be issue with the demand forecasting. Okay, so the production line is also imbalanced, and that may be issue for the asset underutilization. Okay, few of the asset are basically underutilized. So these are the issues: lack of synchronization, lack of real-time data, irregular review of safety stock, lack of flexibility, price volatility, and production line imbalance. Okay, so these are the issues with the supply chains. Next is how we can come up with these challenges. So we have many models that are being used by the companies to come up with the challenges. Okay, so the very first we are discussing is advanced planning system, that is APS. So advanced planning system, what it does, this is a model being made with the AI tool, and what it does is it synchronizes the planning with the execution. Okay, so with this tool, advanced planning system, what the companies can do, they can synchronize their supply chain planning with the execution.
Next is enhanced information technology. Enhanced information technology, what it does is it provides real-time data visibility across the supply chain. Okay. So we can track the orders, we can track our return and all these things. So these facilities is being provided with this model, which is known as enhanced information technology. Next is dynamic safety stock optimization. So dynamic safety stock optimization, it uses advanced analytics to regularly adjust the inventory level. So dynamic safety stock is basically used for the stock maintenance. Okay. Next is supply chain network optimization. Network optimization means mm, optimization means the parties that are involved. So this is a basically a model. It has different scenarios to find out the best balance between the cost to serve and customer service level. Okay, so supply chain network optimization tool, it manages, it helps in getting the optimum balance. Okay, so this is one tool. Next is financial risk management strategies. So financial risk management strategies, it is to mitigate the impact of price volatility. So this was another issue, है ना, ये एक चैलेंज था ना, तो इस चैलेंज को आप कैसे मिटा सकते हो? इस चैलेंज को आप मिटा सकते हो अगर आपके पास ये टूल रहे जिसका नाम क्या है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। ठीक है, फिर एक है लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक। तो ये टेक्निक जो है ना, इससे क्या होता है, आप बैलेंस कर सकते हो अपने प्रोडक्शन लाइन को सो दैट यू गेट एन ऑप्टिमल बैच साइज। अच्छा, ऑप्टिमल बैच साइज क्यों चाहिए आपको? क्योंकि अगर ऑप्टिमल बैच साइज करोगे तभी तो आप ईओक्यू पता कर सकते हो, और ईओक्यू पता करोगे तभी तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो पाएगा, है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम होगा, और ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कम होगा तो इन्वेंटरी कॉस्ट कम होगा, इन्वेंटरी कॉस्ट कम होगा तो आपका ओवरऑल आपका लॉजिस्टिक का खर्चा बचेगा, है ना। तो these are the various tools that are being made with the help of this artificial intelligence and machine learning to come up with the challenges. So again repeating, what are the few tools that we are discussing? पहला है advanced planning system जो कि आपको planning में help करेगा, फिर है enhanced information technology जो कि आपको real time data visibility देगा, फिर है dynamic safety stock optimization जो आपका inventory level को maintain करेगा, फिर है सप्लाई चेन नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन जो कि आपको बेस्ट बैलेंस बहुत सारे सिनेरियोज क्रिएट करके देगी। सिनेरियो वन, अगर आप अगर ज्यादा कुर्सी बनाओ कम चेयर बनाओ तो क्या होगा, अगर कम कुर्सी ज्यादा टेबल बनाओ तो क्या होगा। सिमिलरली इन सप्लाई चेन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई चेन, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप इतना स्टॉक रखो इन्वेंट्री में तो क्या होगा, अगर आप इतना कम स्टॉक, मतलब बहुत सारे सिनेरियोज बनाकर रखे जाएंगे, और उस सिनेरियोज में से बेस्ट बैलेंस जो रहेगा कॉस्ट टू सर्व और कस्टमर सर्विस लेवल में निकाला जाएगा। और ये किसके थ्रू पॉसिबल है? ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ सप्लाई चेन नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन टूल। ठीक है, फिर एक टूल है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो कि आपके प्राइस के वोलेटिलिटी को मेंटेन करने में, प्राइस के वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट कम करने में हेल्प करेगा। मिटिगेट मतलब कम करना, है ना। नेक्स्ट इज लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक क्या है? लीन का मतलब ही हमने पढ़ा है कि कहाँ पर यूज होता है, ये होता है आपका लीन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, आपका लीड टाइम को कम करने के लिए, या फिर आप ये बोलो कि जैसे सिक्स सिग्मा होता है, जस्ट इन टाइम होता है, जो कि कंट्रोल टेक्निक्स है ना। तो प्रोडक्शन लाइन में हेल्प होता है कि आपका बैच साइजेस वगैरह मेंटेन हो, प्रॉपर डिमांड फोरकास्टिंग हो, ताकि कोई भी अंडर या ओवर स्टॉकिंग या ये सब केसेस ना आए। सो दीज आर द वेरियस टूल्स टू कम अप विद द challenges that we have in the supply chain. Okay, so with this we have done our unit number 1. Okay, all right, so Abhishek, sorry, Abshika, Juli, Lalit, Kapil, Sumit, and Bhupendra.
we have completed our unit number 1. If you have any issue, you can just let me know. Otherwise, then we'll be picking up our unit number 2. So see, what type of questions we can get from unit number 1. I'll be discussing that also. See, what we have discussed the basic meaning of the supply chain. है ना? We have discussed the basic issues or the challenge with the supply chain. We have discussed the various network that was previously being used as a generic system where there was linear supply chain being used, and then we discussed about the modern supply chain. Then we discussed what are the few addition like information, fund, and product are the few addition in the new modern supply chain. Okay, so we discussed how the network has now become a web because of the complex issues and all, you know. So all these are being discussed. So you can just expect a simple question where you can be asked about the what is supply chain, what may be the issues, what are the challenges, or what are the techniques that are available, or you can be asked about the supply chain network or supply chain web. What do you mean by that, and how the parties are being engaged, or who are the parties that are engaged in the supply chain. Okay, so the first chapter basically talked about this only. The your understanding, it tries to fix up your understanding about the supply chain. If you if you have any question, you can ask me, or else we can move to chapter number 2. मैम यूनिट 1 में दो टॉपिक्स अभी भी हैं, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी वर्सेस सप्लाई चेन स्ट्रेटजी एंड सेकंड इज अचीविंग स्ट्रेटेजिक फिट। तो ये आगे स्लाइड्स में है या फिर? एक सेकेंड, इसको देख लेती हूँ। ये हमने कवर नहीं किया है क्या? नो मैम। मैं एक सेकेंड इसको चेक कर लूँ। ओके मैम। यूनिट नंबर 1। ओके, आई गेस ये कहीं पर आपके स्लाइड्स में होगा, बट मुझे अभी स्लाइड में नहीं मिला। ये मेरे लेक्चर नोट्स में था, तो आई एम शेयरिंग फ्रॉम दैट। आई गेस द वर्ड फाइल इज विजिबल टू यू ऑल। यस मैम। Okay, see, there was one topic related to the competitive strategy versus the supply chain strategy. Okay. So competitive strategies, when we are discussing, normally competitive strategy का मतलब क्या होता है कि developing some strategies to compete, right?
या तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हो कि आपका प्राइस और कंपटीटर से कम है, आप प्राइसिंग में कॉम्पिटिट कर रहे हो, या तो क्वालिटी वाइज कॉम्पिटिट कर रहे हो, या प्रोडक्ट वाइज कॉम्पिटिट कर रहे हो, या फिर जैसे कि अमेजन है कि प्राइम सर्विसेज देता है तो सर्विस वाइज कॉम्पिटिट कर रहा है ना। तो आप अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाते हो फोकसिंग ऑन लाइक डिफेंडिंग योर सेल्फ, है ना, कि आप डिफेंड करो कि हाँ भाई योर पोजीशन इज हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग दिस पर्टिकुलर सर्विस दैट इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड बाय एनी अदर कंपनी, एनी अदर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज। और सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी क्या होता है ना, सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी जो रहता है वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, ऑल्दो वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बनता है ना, लेकिन वो टोटली कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी नहीं होता है। रीजन बीइंग कि उसका जो फोकस होता है वो सप्लाई चेन के टुवर्ड्स होता है ना, टू maximize the efficiency and value for the customer, but is basically it is concerned on the uh, एग्जीक्यूशन बेसिकली, ओके, कि सप्लाई चेन में किस तरह से स्ट्रेटेजी डेवलप की जाए कि उससे मतलब आप एक अपनी पोजीशन बना पाओ, एक डिफेंडेबल पोजीशन बना पाओ, ठीक है। तो जस्ट सी here we have defined the competitive strategy. Competitive strategy का मतलब क्या होता है? It involves positioning a company to gain a competitive advantage through कॉस्ट लीडरशिप। या तो आप कॉस्ट में सबसे कम हो, या फिर कॉस्ट में सबसे हाई हो, या फिर कुछ आप ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हो, है ना। कुछ कंपनीज जो है वो अपने कॉस्ट के बेसिस पर प्ले करती है, कुछ कंपनीज अपने डिफरेंशिएशन लाइक एप्पल जो है वो अपने आप को डिफरेंशिएट करती है ना, तो इस वजह से वो कॉम्पिटिटिव है। या फिर फोकस, सो इट इज अबाउट चूजिंग द राइट सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट इट डिलीवर यूनिक वैल्यू टू द कस्टमर। तो आप कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप करते हो जिससे आपके कस्टमर को यूनिक वैल्यू मिले, है ना, setting the business apart from its competitor, है ना। While if we define the supply chain strategy, then supply chain strategy is about how the supply chain should operate to support the competitive strategy। जो भी आपने competitive, like आपने competitive strategy बनाई है प्राइम डिलीवरी की, ठीक है, पहले प्राइम डिलीवरी की सर्विस सिर्फ और सिर्फ अमेजन ने किया था, और सिर्फ अमेजन के पास था कि विद इन द डे डिलीवरी जो था ना। अब तो खैर देयर आर मेनी कंपनीज लाइक ब्लिंकिट, आप देख लो, इट उसका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी ही क्या है कि इट विल लाइक डिलीवर यू विद इन हाफ एन आवर, है ना, 10 मिनट, सॉरी 10 मिनट्स डिलीवरी प्रॉमिस करती है ना बिकनी ये ब्लिंकिट, है ना। तो ब्लिंकिट की सर्विस है ही कि आपको 10 मिनट्स डिलीवरी में डिलीवरी प्रोवाइड करना है ना। तो सप्लाई चेन, तो ये 10 मिनट्स डिलीवरी प्रोवाइड करना, ये और अपने आप को और सारे जो भी ये सब है, बिग बास्केट है और ये सारे हैं, उनसे अलग ब्लिंकिट इसी स्ट्रेटेजी पे हो रहा है कि हाँ भाई इट कैन प्रोवाइड विद इन 10 मिनट्स। तो उसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी वो क्या कर रहा है कि हाउ फास्ट इट कैन डिलीवर, है ना, और लास्ट मिनट आप उसमें चेक इन कर सकते हो ना, लास्ट मिनट आप चेंजेस ला सकते हो ना, ऐसा कुछ है ब्लिंकिट में। तो ब्लिंकिट अपने आप अपने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या बनाई है, अपनी टाइमिंग, है ना। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, इसको सपोर्ट जो ये 10 मिनट में पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा, तो इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, इसको सपोर्ट तो सप्लाई चेन कर रहा है ना। सप्लाई चेन नेटवर्क इतनी स्ट्रांग है और इस तरह की बनी हुई है कि इट इज एबल टू डिलीवर विद इन 10 मिनट्स। इसका मतलब उसके वेयर हाउसेस आसपास होंगे, मस्ट बी विद इन द proximity of the customers and the suppliers, और वहाँ जो लॉजिस्ट ट्रांसपोर्टेशन यूज होते होंगे वो कुछ ऐसे से होंगे कि इट इज एबल टू प्रोवाइड, है ना। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को जो सपोर्ट करता है वो होता है सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन का अलग से कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को ओवरऑल सपोर्ट करता है ना। So it deals with the design and management of the flow of goods, information and finances to align with the overall business goal, है ना। उसका काम क्या है supply chain strategy का, to align with the overall business goals, ensuring efficiency and customer satisfaction, right? So for example, see Amazon कॉस्ट लीडरशिप एंड इनोवेशन। Amazon अपने आप को कॉस्ट लीडरशिप, मतलब जब आप सारे वेबसाइट पर चेक करोगे तो माइट बी Amazon जो है वो आपको कॉस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस पे देता है, मतलब और सारे जो सप्लायर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स जो हैं, उनसे कम कॉस्ट पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी उसका क्या है,
to provide you the product at a lower price, right? And also better customer convenience compared to other retailer. तो ये हो गया इसका competitive strategy. उसकी competitive strategy क्या है? To provide at lower price. However, उसकी supply chain strategy अगर देखी जाए तो they have invested heavily in advanced distribution infrastructure. You agree with this ki Amazon ne actually they have invested very heavily on the on developing advanced distribution infrastructure, including the fulfillment center, the sophisticated logistic technique. It has many warehouses. The fulfillment center is nothing but the warehouse. Okay, it has the sophisticated logistic techniques. Okay, so Amazon uses the AI to predict order volumes. I have already discussed in the class that Amazon uses the predict order volume. Predict order volume मतलब कि आपने अभी order दी भी नहीं है, but they predict on the basis of your history, on the basis of your scrolling, on the basis of your orders. It predicts कि you may order for this delivery, and on the basis of that it provides it come up with the good in its warehouse. Okay, so it maintains the warehouse on the basis of your predict order volume. Okay, so it uses AI for this predict order volume, and it optimizes the routes. Optimization of routes means it chooses the best possible routes so that it can provide the delivery within the scheduled time. Okay, so this is what is known as supply chain strategy. So competitive strategy का मतलब समझ में आया? जैसे कि एग्जांपल है Amazon का, तो Amazon competitive strategy is to provide the good at a lower price, but उसका supply chain strategy क्या है? इस lower price को किस तरीके से प्रोसेस क्या रहेगा टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर. उसने प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है, प्रॉपरली एआई टूल्स में इन्वेस्टेड है, सो दैट it can get the optimum route and everything, and thus it can help to gain the competitive edge. ठीक है, तो सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी जो है वो एक हेल्पर की तरह काम करता है जो प्रॉपरली रूट्स डेवलप करके और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को मतलब प्रोवाइड करता है. ओके, so this was the case study of Amazon which we have taken. Next is the case study of Zara. Zara case study we have discussed many a times. तो Zara का क्या है? Zara actually, you know, it is a fashionable clothing company which focuses at moderate prices with rapid refreshes of product line. उसका जो मतलब key area ही है ना कि it changes and it is able to change itself very fast with the changing customers demand. तो rapid मतलब change in its inventory जो है ना, यही इसका key component है. Okay, of Zara, कि वो अपने आप को बहुत जल्दी अपना पूरा स्टोर जो है वो चेंज कर लेता है एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर. अच्छा, तो दिस इज द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी. नाउ व्हाट इज द सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी? द सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी इज about Zara, it keeps its production and logistics operations primarily in Spain. Spain की कंपनी आपको पता ही होगा Zara, है ना? So despite the higher cost to maintain control over so this is the quick turnaround. Quick turnaround का मतलब क्या होता है कि फटाफट अपने पूरे स्टोर को वो चेंज कर लेता है एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स. ओके, as per the fashion change. Okay, so their supply chain strategy, it enables design to store cycle of just few weeks, much faster than competitors. जो उसके competitors इतने टाइम लगाते हैं वो much few weeks में ही वो अपने पूरे स्टोर को चेंज कर लेता. हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन इट मेंटेन्स, सपोर्टिंग देयर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी डिफरेंशिएशन विद थ्रू द स्पीड एंड रिस्पॉन्सिवनेस. सिमिलरली ये वॉलमार्ट का केस दिया हुआ है, टेस्ला का केस है. Okay, so these 4-5 case studies I have prepared just to make you understand what is known as competitive strategy and what is supply chain strategy. I hope now it is clear. We just have discussed the Amazon and Zara case study. Still you have this Walmart case study and the Tesla case study, where you can just understand the competitive strategy
and the supply chain strategy. Okay, so the alignment between the competitive and the supply chain strategy is very essential for achieving the business goal. We need to have a well designed supply chain strategy, not only to support the competitive strategy, but also providing the firm with a significant competitive advantage in the market. Okay, thus business must continuously reassess both. बिजनेसेस को हमेशा दोनों को स्ट्रेटेजाइज करना है, किसको, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को भी और साथ ही साथ सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी को भी, so that it can ensure to have an aligned and it can align with the changing market condition and also the technological advancement. Okay, so I guess you have understood this competitive strategy and supply chain strategy. Yes, ma'am. Okay, next एक और टॉपिक जो रह गया था वो था अचीविंग स्ट्रेटेजिक फिट इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, है ना. So what does it mean? Achieving strategic fit in supply chain, it basically involves aligning the supply chain strategy with the competitive strategy of a company to ensure coherence and synergy. Okay, इसका मतलब स्ट्रेटेजिक फिट इन सप्लाई चेन, मतलब जो आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहे हो उसमें जो स्ट्रेटेजी जो आप यूज कर, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, कि स्ट्रेटेजी नॉर्मल वर्ड का मीनिंग क्या है, मतलब सोच समझ के, विथ ऑल द गोल्स इन फ्रंट ऑफ यू, विथ ऑल द ऑब्जेक्टिव्स वेरी क्लियर टू यू. आपके पास जैसे अभी आप बैठे हो 4-5 घंटे के लिए मेरे पास, तो आपके पास जो आपकी जो गोल्स है वो बहुत क्लियर है, आपके ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर है कि मुझे क्या करना है, ये सिलेबस कंप्लीट करना है. गोल्स है कि मुझे मार्क्स जो है 90% अबव लाना है. तो आपके गोल्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर हैं, आपको आपके टाइम लिमिट्स बहुत क्लियरली पता है कि आज 14 मई है और आपका एग्जाम कितने तारीख को है, कितना टाइम गैप है. यू आर वेरी क्लियर अबाउट दैट. आपको अपने कैपेसिटी का पता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कितना याद कर सकता हूँ, कितना पढ़ सकता हूँ, है ना. तो इस अकॉर्डिंग ये सारे रिसोर्सेज, इंफ्रा, ये सारे लिमिटेशंस, ये सारा कुछ देखते हुए आप जो भी अपनी अपना प्लान करते हो ना, उसी को स्ट्रेटेजी बोलते हैं. क्योंकि स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है, प्लानिंग होती है. स्ट्रेटेजी के अंदर आप प्लान करते हो विथ द assumption that you know your goals properly, you know your objective properly, you have or you know about the limitations also. ठीक है, तो ये सब को देखते हुए आप जो प्लान करते हो उसी को तो कहते हैं स्ट्रेटेजी. ठीक है, तो हियर वी आर टॉकिंग कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में स्ट्रेटेजीज को, स्ट्रेटेजिक फिट क्या होगा. ओके, तो स्ट्रेटेजिक फिट में क्या आप करोगे कि आप अलाइन करने की कोशिश करोगे सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी को कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के साथ. अभी जैसे हमने देखा ना कि अमेजन का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या है कि वो औरों की अपेक्षा, जो और सारे प्लेटफॉर्म है उनकी अपेक्षा जो है वो कम थी प्राइस में आपको प्रोवाइड करता है गुड्स. ठीक है, तो वो उसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी था और विद इन द टाइम सप्लाई करता है. अच्छा, कम कम और सारे प्लेटफॉर्म जो प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्राइस से कम प्राइस में प्रोवाइड करने के लिए क्या अमेजन को कुछ और एफर्ट्स लगाने पड़े होंगे और सारे कॉम्पिटिटर्स की अपेक्षा, यस लगाने पड़े होंगे. तो उसने क्या और सारे अलग जो है एनर्जी, क्या उसने और सारे अलग स्टेप्स उठाए हैं, उसने प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, प्रॉपर एआई टूल्स यूज कर रहा है, वो प्रॉपर एक प्री ऑर्डर प्लानिंग करके चल रहा है, वो एक ऐसी एआई टूल को यूज कर रहा है जो प्री ऑर्डर प्लानिंग कर दे रहा है ना. तो उसने ऐसे सारे टेक्नोलॉजीज और टूल्स यूज किए हुए जिसकी वजह से वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को अलाइन कर पा रहा है या फिर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को अचीव कर पा रहा है. तो स्ट्रेटेजिक फिट का मतलब, ये स्ट्रेटेजिक फिट जो वर्ड है ना, इसका मतलब ये है कि आप अपने सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी को कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के साथ प्रॉपरली फिट कर पा रहे हो. ठीक है, this alignment is crucial for enhancing the performance and achieving the business goals. ठीक है, let's see strategic fit का मतलब. strategic fit refers to degree to which an organization supply chain capability, supply chain की capability, it supports the execution of the competitive strategy.
आपने अगर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी फिट की है कि मैं सेम डे डिलीवरी दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, या ब्लिंकिट प्रोवाइड करता है कि आपको 10 मिनट में डिलीवरी होगा, तो उस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को मीट करने के लिए सप्लाई चेन का कैपेबिलिटी बढ़ाना विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स एंड इंफ्रा एंड एवरीथिंग रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, इसी को तो क्या कहते हैं, इसी को तो कहते हैं स्ट्रेटेजिक फिट. ओके. So it ensures that the operational choices made within the supply chain reinforces the targeted customer value proposition and the business overall strategy. Right? So what are the component necessary? The component necessary is firstly to understand the customer and supply chain uncertainty. भाई इस चीज को समझना जरूरी है कि कस्टमर और सप्लाई चेन की अनसर्टेनिटीज हो सकती है ना. उसके लिए फिर आपको किस तरह से यू हैव टू कम अप विद द बैकअप एंड एवरीथिंग, है ना. नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द सप्लाई चेन कैपेबिलिटी. जैसे मैंने आपको बोला कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक फिट आप अपने लिए बनाते हो, बनाओगे एग्जाम के लिए, तो आप क्या क्या एजम्पशंस लेकर चलोगे, आप अपने कैपेबिलिटी को, लिमिटेशंस को, क्या क्या आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, कितने आपकी कैपेसिटी है, कितना आपके पास टाइम अवेलेबल, ये सब देखोगे. सिमिलरली यहाँ पर कंपनीज देख रही है कि क्या क्या अनसर्टिनिटीज हो सकता है. जैसे आप प्लान करके अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप प्लान कर चलोगे ना कि बाय द वे एक दो दिन कभी हफ्ते मतलब विद इन द मतलब जो आपके टाइम बचे हुए एग्जाम के लिए, उसमें एक दो दिन हो सकता है कोई ऐसा फैमिली इमरजेंसी आ जाए जिसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़े, जिसकी वजह से आप एक दो दिन लूज कर दे, है ना. एक दो दिन आपकी तबियत खराब हो जाए तो आपका वो एक दो दिन लूज हो जाएगा, है ना. तो इस तरह से आप वो जो है बेंचमार्किंग भी लेकर चलते हो, एक वो लेकर चलते हो कि हाँ भाई आप मतलब दो दिन खत्म भी हो जाए तो हाउ यू विल बी एबल टू लाइक प्लान अप, है ना. Similarly, this is these are the component that needs to be taken care while making this strategic fit. पहला है understand the customer, understand there maybe that there may be case of supply chain uncertainty or the supply chain, understanding the supply chain capability or aligning competitive and supply chain strategies. ठीक है, तो कैसे इन दोनों को अलाइन करना है. ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स को आपको देखना है. उसके बाद क्या स्टेप्स टू अचीव स्ट्रेटेजिक फिट, क्या स्टेप्स होने चाहिए. पहला, डिफाइन द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज क्लियरली. आपका कॉम्पिटिटिव, आप क्या अचीव करना चाहते हो, क्या चाहते हो. कॉस्ट कटिंग करना मतलब लोगों को, जैसे आप देखोगे मीशो है, मीशो क्या है, मीशो किस किस पर प्ले करता है. मीशो का प्लेइंग एज क्या है कि आपको बहुत कम प्राइस में, उस प्राइस में आपको किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा, उस प्राइस में आपको मीशो प्रोवाइड कराता है. तो मीशो क्या कभी ये चैलेंज करता है कि मैं क्वालिटी प्रोडक्ट दूंगा, नहीं. कभी ये चैलेंज करता है कि मैं बहुत फास्ट डिलीवरी दूंगा, नहीं. लेकिन मीशो हमेशा ये प्रोवाइड करता है कि यू विल गेट द गुड एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, है ना. तो आपको सबसे पहले तो अपने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को डिफाइन करना है प्रॉपरली कि आप कॉस्ट पे प्ले करना चाहते हो, आप क्वालिटी पे प्ले करना चाहते हो, आप सर्विस पे प्ले करना चाहते हो. सॉरी, yes, is there anyone saying something? Abhishika, are you saying something? No? All right. So this is what we are saying ki first thing is to define the competitive strategy clearly. Next is define the supply chain strategy. Okay. You have to define who will be the suppliers, manufacturers and where will be the centers and all the process involved therein. ठीक है, तो आप इसको अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करो. ठीक है, सप्लाई चेन को. फिर उसके बाद यू हैव टू इंश्योर कंसिस्टेंसी बिटवीन सप्लाई चेन एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज. इन दोनों के बीच में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, किसके किससे, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी और सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी. देन द लास्ट स्टेप इज टू रिव्यू एंड अडेप्ट स्ट्रेटजीज. हमेशा आप देखोगे क्या होता है कि आपको अपना स्ट्रेटेजी बनाने के बाद रिव्यू करना चाहिए और अडेप्ट करना चाहिए, मतलब औरों को देख करके भी सीखना चाहिए, इन्वायरमेंट को देखकर जानना चाहिए कि व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट कैन बी डन, व्हाट ऑल अदर कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग, है ना. तो मार्केट इन्वायरमेंट एंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को आपको देखना चाहिए. ओके, so these are the steps to achieve the strategic fits and the real world examples also I have taken. See,
डेल्स डायरेक्ट सेल मॉडल जो था, डेल का जो डायरेक्ट सेल मॉडल था, तो उसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी जैसे डेल ने बनाई थी कि डेल इनिशियली कॉम्पिटेटेड थ्रू अ डायरेक्ट सेल्स मॉडल फोकसिंग ऑन कस्टमाइजेशन एंड क्विक डिलीवरी, है ना। वी हैव डिस्कस ना कि डेल की जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी थी वो क्या थी कि प्रोवाइड यू द डायरेक्ट सेल्स, आप जैसे ऑर्डर करोगे आपके लिए वो गुड कस्टमाइज किया जाए, आप जितना जीबी का रैम बोलोगे, जितना जीबी का जितने स्पीड अप का ये बताओगे मदरबोर्ड, वैसे लगेगा, है ना। इट विल बी प्रॉपर्ली कस्टमाइज्ड एज पर योर ऑर्डर। तो उसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी ही यही थी, ठीक है। अब सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? सप्लाई चेन वाज टू कॉन्फ़िगर सप्लाई, डेल सप्लाई चेन वाज कॉन्फ़िगर्ड टू बी हाईली रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब it will follow the instruction of the customer, ठीक है। it was configured to be highly responsive with build to order manufacturing। इनका मॉडल क्या था? build to order, ठीक है। जैसे ऑर्डर आएगा वैसे बिल्ट अप होगा। build to order manufacturing and direct to customer delivery, there will not be any middleman involved, ओके। अब तो खैर काफी टाइम ये फ्रेंचाइजी और ये सब स्टोर्स में ये सब आपको डेल वगैरह मिल जाता है, बट till you can order directly, है ना। तो डायरेक्टली ऑर्डर होता है। दिस अलाइनमेंट allowed Dell to successfully fulfill its promise। और ये हाई रिस्पॉन्सिव मतलब बिल्ड टू ऑर्डर मॉडल और डायरेक्ट टू कस्टमर वाला जो कंसेप्ट था इनका, इसकी वजह से ये अपना कस्टमाइजेशन कर पाते थे और अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को फुलफिल कर पाते थे विद इन द क्विक डिलीवरी टाइम्स, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो बात को। नेक्स्ट इज आइकियाज कॉस्ट लीडरशिप। तो आइकिया अपने आप को कॉस्ट लीडरशिप बताता है कि जो जो क्वालिटी मैं दे रहा हूँ उस क्वालिटी का ये लोएस्ट प्राइस में अवेलेबल हो रहा है, आइकिया ऐसा बोलता है, ठीक है। तो IKEA competes primarily on cost leadership, targeting price sensitive customers। किस कस्टमर को टारगेट करता है? प्राइस सेंसिटिव कस्टमर को, ठीक है। और उनकी स्ट्रेटेजी ये है, ये तो उनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, उनकी सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी है। इट डिजाइंस प्रोडक्ट रेडी फॉर असेंबली। वो प्रोडक्ट ऐसे बनाकर रखता है जो कि रेडी फॉर असेंबली रहेगा, और एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स इट असेंबल्स एंड ships the product, ठीक है। तो the global network of suppliers is strategically chosen for cost efficiency। किस टाइप का नेटवर्क ये लेते हैं? ग्लोबल नेटवर्क लेते हैं, ठीक है। ग्लोबल नेटवर्क, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ग्लोबल नेटवर्क सप्लायर्स हैं, मतलब सप्लायर्स जो है वो ग्लोबल नेटवर्क है। और उसके बाद इट चोजेस फॉर कॉस्ट एफिशिएंसी एंड stores are large warehouse styles format that reduce retailing cost, okay। So large warehouses are there where they keep all the products ready for assembly, and as soon as the order is given, it assembles the product and provide and supplies through the global network, okay। Similarly, the Zara's case study is discussed here। So you can just see that if you want to achieve the strategic fit, then it requires deep understanding of both कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कि किस किस चीज पर कंपटीशन किया जा सकता है, क्या टाइम पर कंपटीशन किया जाए, या क्वालिटी पे किया जाए, या कॉस्ट पे किया जाए, एंड द इंटरनल कैपेबिलिटी। अगर आप इफ यू आर प्रोमिसिंग कि you will be delivering in 10 minutes, and if your supply chain is not that very developed, and if you are not using so sophisticated technologies in your supply chain, then you will not be able to meet up with your competitive स्ट्रेटेजी, है ना। आपने जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बनाया है और आपका सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी उस हिसाब का नहीं है जो उसको मीट कर पाए, तो उसको तो स्ट्रेटेजिक फिट नहीं बोलेंगे ना, है ना। तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि टू अचीव द स्ट्रेटेजिक फिट you need to have the competitive landscape along with the capability of the supply chain। So by ensuring that these elements are in alignment, companies they can effectively execute their competitive strategy, meet the customer expectations, and enhance the overall performance, okay। So both are required, the external market condition and the internal capability, दोनों ही required है for a proper strategic fit, okay। So with this we have covered those two topics also. Those two topics were left out in the is this one PPT। So I guess you have understood the competitive strategy, the supply chain strategy, and the strategic fit. Is it clear, everyone here? Yes, ma'am.
Okay, Yes, okay. ma'am. So thank you. Thank you. Is there any question with unit number 1? No. No. Can we move to unit number 2 or you want 5 minutes break? Want a break of 5 minutes or can we continue? We can continue. Continue. Okay, all right. See, this is done. So this was the lecture note basically I made. So I'll share this also with you. Okay. So moving to unit number 2. Okay, so unit number 2 basically discuss about how to manage these inventory. Okay. Okay. Unit number 2 will be basically discussing how to manage this inventory. So basically we'll be discussing on two main models. Two main models, that is deterministic model and probabilistic model. Okay. So these are the two models that are being used to manage the inventory. Okay, why we are talking about the management of the inventory? We are talking about the management of the inventory. Reason being, in supply chain management, the most important thing to manage is inventory. अगर आपके स्टोर में जो इन्वेंट्री का मतलब जो सामान जो पड़ा हुआ है, जो माल जो आपका पड़ा हुआ है, वो कितना होना चाहिए? वो इतना होना चाहिए that it can be sold out within the given period of time, so that neither the organization or the store runs out of the inventory, nor it should have over inventory such that it is wasted, maybe because of the change in the fashion, maybe because it becomes obsolete. ठीक है, तो inventory should be properly managed so that there is no Then case of under or stock out. overstocking. हाँ, स्टॉक आउट वाला कोई सिचुएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ओवर होगा तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आपका फैशन से चला जाएगा प्रोडक्ट, है ना, टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाएगा। और इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी आउटडेट हो रहा है और इतना ज्यादा डायनेमिक इन्वायरमेंट हो चुका है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉपर, स्पेशली इन द फैशन इंडस्ट्री, आपको बहुत प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा इन्वेंट्री, है ना। ठीक है, तो इसी वजह से द चैप्टर नंबर 2 इज होलली डेडिकेटेड अबाउट द मैनेजिंग ऑफ द इन्वेंट्री। तो इसमें बेसिकली दो मॉडल अपने को पढ़ना है, जो है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। ठीक है, तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक मॉडल एक मैथमेटिकल टूल है। ठीक है, एक मैथमेटिकल टूल है, जैसे कि एलपीपी आप लोग नॉर्मली जानते होंगे, एक मैथमेटिकल टूल है जिससे आप क्या निकालते हो? आप निकालते हो कि बेस्ट जो है आपको कितना, आपका बेस्ट प्रोडक्शन होना चाहिए, है ना। आप निकालते हो लीनियर प्रोग्रामिंग जो आप निकालते हो, तो उसमें आप निकालते हो कि कितने बेस्ट प्रोडक्शन होने चाहिए, तो उससे क्या होगा? कॉस्ट कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा। सिमिलरली डिटर्मिनिस्टिक मॉडल जो है ना, वो एक मैथमेटिकल टूल है जिससे आप निकाल पाओगे कि कितना आपको इन्वेंट्री मैनेज करना चाहिए, कितने आपके पास इन्वेंट्री होने चाहिए, ठीक है, या फिर कितना आपको ऑर्डर करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आता है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में। तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का मतलब है ना, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ यू कैन जस्ट सी इट इज deterministic. Means there is something that is already defined and determined, है ना। पहले से वो आपको पता है, you are known of this, and the parameters, जो भी उसके parameters है वो fixed है, determined है, defined है पहले से। ठीक है, तो ये एक ऐसा मैथमेटिकल टूल्स है जिसमें आप डिसीजंस लेते हो रिलेटेड टू
सिचुएशंस रिलेटेड टू सिचुएशंस, और वो सिचुएशंस कुछ ऐसे हैं, जिस जो आपको पहले से पता है या फिर जिसके पैरामीटर्स आपको डिफाइंड है। जैसे कि आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको पता है कि हर 6 महीने में 2 बार एग्जाम होना है, और वो एग्जाम नियर बाय मई में, और दूसरा एग्जाम जो है नियर बाय आपका जो है सितंबर अक्टूबर में होगा, है ना। जो भी आपको पीरियड ऑलमोस्ट उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, है ना, बट द थिंग विल बी, इट विल नॉट बी ऑल टुगेदर चेंज्ड, है ना, इट विल बी ऑलमोस्ट फिक्स्ड, है ना। तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में भी सेम है कि दिस इज अ मैथमेटिकल टूल विच इज अप्लाइड इन द सिचुएशंस. It is applied only in those situations where the parameters are almost known, and they are almost fixed. ठीक है, ठीक है. So these models, what are the assumption is that it is fixed, the parameters are fixed and known. तो कौन से पैरामीटर, कौन से किस पैरामीटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, किस वेरिएबल के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिमांड के बारे में, हम बात कर रहे हैं लीड टाइम के बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट, कि कॉस्ट भी ऑलमोस्ट सेम होगा, डिमांड भी ऑलमोस्ट इस टाइम पर दिस विल बी द डिमांड. ये कैसे पता लग पाया है आपको? ये पता लग पाया है बिकॉज ऑफ द, आपने जो हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट किया है ना, आपने हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट करके जो पैटर्न्स और चार्ट्स बनाए, इसकी वजह से आप कुछ पैरामीटर्स जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड और डिटरमाइन कर पा रहे हैं. जैसे यू ऑलरेडी नो कि एट दिस पीक आवर this will be the demand. Almost the companies like the FMCG company have this period, this lead time, and almost the cost is this much. Okay, so in all those situations where these variables like the demand, like the lead time, like the cost, they remains constant and predictable. Constant and predictable. ठीक है, तो in those situation we can use the predictable model. So these models, they help in making decisions about how much delivery to order. Okay, where they are used to determine how much delivery to order, when to order to minimize the cost. किस time पे order करना है ताकि cost minimize हो. Okay, so this is very clear that this model is based on the assumption of fixed demand, almost predictable lead time, and all other factors which can influence the inventory management are fixed and predictable. Use both the word fixed and predictable. Fixed क्योंकि पता है, predictable मतलब जिसका आपको अंदाजा है ना, तो that is what is. तो deterministic model उन्हीं सारे situations में लगता है. Okay, so deterministic model, they provide solutions under the assumption that all these variables are almost fixed, and okay, and there will be minimum variability. अगर variability होता भी है, changes होते भी है, तो it will be very minimal. Okay, so few of the models in the deterministic model के दो example मैंने यहाँ use किए हुए हैं. One is EOQ, economic order quantity, and the other is EPQ, economic production quantity. ठीक है, तो this is nothing but an example of deterministic model के ये दो बेहतरीन example है. ठीक है, पहला है economic order quantity. Economic order quantity क्या होता है? ये basically deterministic model में economic order quantity जो है use होता है to determine the inventory level. How much to order, नाम से ही देखो आप, economic order quantity, how much to order. So it helps in determining the optimal order quantity. Okay, it helps, this EOQ, it helps to determine what, say, the optimal order quantity, है ना. Okay,
So optimal order quantity, optimal means best, optimal order quantity, so that it minimizes the inventory cost. This is our goal, है ना? So that it minimizes the inventory cost. Okay. And what is being considered? इसमें inventory cost, ये EOQ में क्या क्या देखा जाता है? The ordering cost and the holding cost. Okay. So considering both the ordering cost and the holding cost. Okay. And what is the formula of EOQ? Although it is not required, you will not be asked about the calculation, I guess, but you should know. EOQ का formula क्या हो जाता है? EOQ का formula आपका होता है रूट अंडर 2AOC by I, है ना? Okay. तो I'm not getting any root here. रूट का कोई सिंबल नहीं मिल रहा है इसमें, है ना? तो ठीक है, आप यहाँ पर दे दोगे, फॉर्मूला लिख लेना खुद से आप लोग. EOQ is 2 root under 2AO. A is the annual order, O is the ordering cost, C is the carrying cost, I is the interest or the holding cost. Okay, so that way we calculate the EOQ, right? And EPQ is also same. EPQ भी same है, ठीक है? सिर्फ ये प्रोडक्शन के लिए होता है. इट इज बेसिकली EPQ से क्या होता है कि आप प्रोडक्शन मैनेजर को इंस्ट्रक्ट करते हो टू प्रोड्यूस दिस मच. ओके. और EOQ से आप ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हो कि व्हाट इज द बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी, है ना? कि अगर आप इतना ऑर्डर क्वांटिटी अगर करोगे, इतना क्वांटिटी अगर ऑर्डर करोगे तो ये बेस्ट होगा. एंड neither more than that nor less than that will reduce the cost. अगर EOQ फॉर्मूला से अगर आपका ऑर्डर क्वांटिटी 50 आता है, तो अगर आप 60 ऑर्डर करोगे एक बार में या 40 ऑर्डर करोगे ना, तो दोनों उसका प्राइस जो रहेगा वो ऑप्टिमल नहीं होगा. ऑप्टिमल इसी फॉर्मूले को लगाने से होगा. अच्छा, These are the examples of deterministic model. इसका मतलब EOQ मॉडल अज्यूम कर रहा है कि आपको आपका होल्डिंग कॉस्ट पता है, you know your ordering cost, you know your demand, आपको कितनी डिमांड आनी है, that also you know very well, है ना? EOQ आपका ये अज्यूम करता है कि you know all these variables well, you know the lead time it will take, कितना लीड टाइम लगेगा वो भी आपको पता है. ओके, अगर आपको ये सारी बातें पता है, लाइक द होल्डिंग कॉस्ट, लाइक द कैरिंग कॉस्ट, लाइक द डिमांड, if you know the lead time, if you know all these, then you can apply EOQ to calculate your economic or the optimal order quantity. And similarly, if you know all these, then you can also apply EPQ, economic production quantity. Okay. सो EPQ में क्या होता है ना कि जहां पे जैसे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब जैसे आप अपना खुद नहीं बना रहे हो, आप किसी और सप्लायर से मंगवा रहे हो, ऑर्डर करके मंगवा रहे हो ना. बहुत सारे ऐसे गुड्स रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं जो कि यू डोंट इन हाउस, यू डोंट बिल्ड इन हाउस, है ना? यू ऑर्डर एंड गेट इट फ्रॉम द सप्लायर्स. तो आप वहां पे EOQ लगा लेते हो. और जहां पे इफ यू हैव योर ओन इफ यू हैव योर ओन प्रोडक्शन हाउस, तो आप क्या करते हो, वो रॉ मटेरियल मानो आपके यहाँ ही बनता है ना? देन व्हाट यू नीड टू डू इज EPQ लगाओगे, इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी की कितनी प्रोडक्शन करनी है ना? तो फॉर्मूला रिमेन्स द सेम फॉर इवन EPQ, बस फर्क इतना है कि EOQ वहां लगता है जहां पे आप ऑर्डर करके मंगवा रहे हो. तो आपको जानना होगा कि व्हाट शुड बी द बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी जो मंगवाया जाए, ताकि उससे ऑप्टिमल कॉस्ट आए आपका, ना कॉस्ट एक्सेस हो ना कम, मतलब कि आपका ऑप्टिमल है.
क्योंकि अगर आप 40 भी मंगवाओगे तो ये हो सकता है कि आप रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से कॉस्ट भागेगा, या फिर आप ज्यादा मंगवा रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है कि कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ईओक्यू मॉडल से आप बेस्ट ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी कर सकते हो। ईपीक्यू से अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में खुद ही आपका अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो आप अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ईपीक्यू मेथड से निकाल करके बता सकते हो कि दिस इज द प्रोडक्शन क्वांटिटी आई वांट। ओके, and the formula again remains the same I have told you. Okay, so it is basically useful for optimizing the production schedules and minimizing the inventory related cost in actually manufacturing companies they use this economic production quantity, क्योंकि उनको अपना प्रोड्यूस करना रहता है ना, तो they generally use this okay, लिख देती हूँ मैं। Ma'am, can you give some example for EPQ? मैं कह तो रही हूँ ना कि जनरली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिनको प्रोड्यूस करना है वो मानो बहुत जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम बताओ कोई आप लोग। जनरली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होते हैं एमएसएमईज होते हैं, तो वो जो भी अपना प्रोड्यूस करते हैं जैसे आयरन एंड ओर का हो गया, तो ये सारे जो होते हैं ना ये अपना खुद का प्रोड्यूस करते हैं रॉ मटेरियल, है ना। तो अब चूंकि वो खुद का प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो ऑर्डर तो किसी को देना नहीं है उनको, है ना। दे हैव टू ऑर्डर देयर ओन प्रोडक्शन सेंटर कि आपको इतना बनाना है, तो वो ऑर्डरिंग वर्ड की जगह प्रोडक्शन वर्ड यूज हो रहा है, बस इतना सा डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्योंकि उन्हें ऑर्डर करके नहीं मंगवाना, उन्हें प्रोडक्शन हाउस को बताना है कि आपको इतना ही प्रोड्यूस करना है। तो बस यही है। ठीक है, तो जिनके खुद के अपने मैन्युफैक्चर मतलब खुद के अपने प्रोडक्शन हाउस है तो वो ईपीक्यू मेथड यूज करते हैं, और जिनको ऑर्डर करना है वो ईओक्यू यूज करते हैं, है ना। जैसे अगर आप अभी कुकिंग करोगे तो जैसे अगर आप घर पर कुकिंग कर रहे हो, है ना, तो आपको किचन में जो भी प्रोड्यूस मतलब जो बना रहा है उसको आपको बताना है कि कितना बनाना है। अगर आप बाहर से ऑर्डर करते हो तो आपको ऑर्डर करने वाले को बताना है कि आपको कितना चाहिए, है ना। तो सिमिलरली यहाँ भी है कि आपके घर के अंदर खुद बन रहा है, कंपनी के अंदर खुद बन रहा है तो ईपीक्यू होता है, और अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो ईओक्यू होता है। फॉर्मूला रिमेन्स द सेम दोनों में, और दोनों का अजम्पशन सेम है कि आपको डिमांड पता है कितनी है, आपको पता है इन्वेंट्री कितनी है, आपको पता है लीड टाइम कितना लगना है ना, ये सब कुछ आपको पता है। तभी आप डिटरमिनिस्टिक मॉडल अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में लगा सकते हो। डिटरमिनिस्टिक मॉडल कहाँ लगता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट में लगता है। अगर आप ऑर्डर ईओक्यू निकाल रहे हो, ईओक्यू निकालने से क्या होगा, आपको बेस्ट ऑर्डर पता चलेगा कि कितना ऑर्डर करना है, तो उससे इन्वेंट्री का कॉस्ट लोअर होगा, है ना। और कितना ऑर्डर करें ताकि हमारे वेयर हाउस में ज्यादा इन्वेंट्री पड़ा ना रहे, ओवर स्टॉकिंग ना हो जाए या अंडर स्टॉकिंग ना हो जाए, ये सब कुछ आपको ईओक्यू से ही पता लग रहा है। तो EOQ or EPQ is an example of deterministic model, and deterministic model is used to manage the inventory, and it is used to manage the inventory only in the situations where you have the known and fixed parameters, where the variables are known to you pre-handed. Fixed, either they are fixed or they are predictable, right? So, ma'am, it is applicable for raw material only. It is this method we are studying for the inventory management, not for raw material. I'm saying आप इन्वेंट्री मतलब जो भी वेयर हाउस में अपना मंगा कर रख रहे हो या ऑर्डर कर रहे हो अपना आगे प्रोसेस करने के लिए, तो आप ऑर्डर जो कर रहे हो तो आप इन्वेंट्री तो मैनेज करोगे ना, कि आपके पास अगर इन्वेंट्री मैनेज नहीं हो तो आप जो भी मानो फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो तो आप बनाने चाहोगे, आपको पता लगेगा कि आपके वेयर हाउस में है ही नहीं वो, तो यू शुड हैव इनफ रॉ मटेरियल्स, है ना। तो आपको इनफ Okay. मतलब कितना कितना रखना है ना, वो आप पता करने की हाँ. कोशिश कर रहे हो, और वो आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, और उसके लिए आप जो मॉडल यूज कर रहे हो वो मॉडल है डिटरमिनिस्टिक, और उसमें जो बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस है वो ये सारे हैं, ईओक्यू हो गया, ईपीक्यू हो गया, है ना। ठीक है।
मतलब जो भी आपके हाँ, जो भी आपका प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है रॉ मटेरियल या जो भी इन्वेंट्रीज, तो उस इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए आप ये सारे मॉडल्स का यूज कर रहे हो ताकि कभी भी आप रन आउट ऑफ द स्टॉक ना हो जाओ या फिर ओवर स्टॉकिंग ना हो जाए, ठीक है। और ईओक्यू का तो बेसिक जो मकसद है कि जो आप ऑर्डर कर कर, जैसे आप घर में क्या होता है, आप हर महीने राशन मंगाते हो, तो राशन मंगाते हो तो आप हमेशा इस पॉइंट ऑफ टाइम में मंगाने की कोशिश करते हो ना, कि ऐसा ना हो कि घर का एक एक राशन खत्म हो गया है, और ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा मतलब स्टोर में पड़ा हुआ है इसके बाद भी आप मंगा रहे हो, क्योंकि वैसे मंगाओगे तो क्या होगा कि जो पहले वाले वो खराब हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, है ना। तो आप घर पर भी तो एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में मंगवाने की कोशिश करते हो जबकि ना वो खत्म हो चुका हो और ना वो बहुत ज्यादा स्टोर्ड हो, है ना। प्लस आप ऐसे मतलब इतना मंगाने की कोशिश करते हो कि वो क्या हो, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम आए, है ना। जैसे जैसे आप बहुत सारे इसमें ऑनलाइन स्टोर्स में, जैसे ब्लिंकिट वगैरह में आपका है लिमिट रहता है कि इफ यू ऑर्डर अप टू 500 देन इट विल बी फ्री डिलीवरी, है ना। तो आप इस फ्री डिलीवरी का बेनिफिट उठाने के लिए, ताकि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाए, आप उसको उस क्वांटिटी तक पहुंचाते हो, है ना। तो यही आपका सप्लाई चेन में भी हो रहा है कि आप ईओक्यू तक पहुंचाने की कोशिश या ईओक्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करो ताकि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाए, और साथ ही साथ आप इससे क्या कर रहे हो, अपने इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का जिक्र ही क्यों हो रहा है, जिक्र हो रहा है क्योंकि हमें करना है अपने इन्वेंट्री को मैनेज। अच्छा, तो क्या डिटर्मिनिस्टिक हर समय लगेगा? नहीं, डिटर्मिनिस्टिक तभी लगेगा जहां आपके पैरामीटर्स फिक्स्ड है, नोन है, आपको अपने वेरिएबल्स वेरिएबल्स मतलब डिमांड, लीड टाइम, कॉस्ट, ये सब का अंदाजा और पता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स जो हो गए वो हो गया ईओक्यू और ईपीक्यू। यही इकलौता एग्जाम्पल नहीं, इसके अलावे भी और मॉडल्स यूज होते हैं, बट दीज आर द मोस्ट कॉमन बीइंग यूज्ड एज एन एग्जांपल ऑफ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। क्योंकि ईओक्यू में भी आपको सब कुछ पता है, आपको प्री हैंडेड पता रहेगा कि अच्छा इस बार हमारा इतना मतलब रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, इतना ऑर्डरिंग कॉस्ट लगना है, इतनी हमारी लीड टाइम लगनी है। तभी तो आप ईओक्यू के फॉर्मूला में पुट इन कर पाओगे, क्योंकि ईओक्यू का फॉर्मूला जो है वो पहले से बना हुआ है, आपको सिर्फ उसमें वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। सिमिलरली ईपीक्यू है, ठीक है। सो दिस इज ऑल डिस्कशन अबाउट द ईओक्यू, this is about the EPQ which we have already discussed. So we have discussed one model, that is deterministic model, and I hope the class is clear with the deterministic model. Yes, no? Yes, ma'am. यस मैम, Okay, बट thank you. हमारे सेकंड चैप्टर में इसमें ना एग्जांपल्स भी दे रखे हैं प्रैक्टिकली करने के लिए। क्या दे रखे हैं सिलेबस एग्जांपल्स में? नहीं, सिलेबस में नहीं, बुक में। लाइक मतलब प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए ये आएगा प्रैक्टिकली ईओक्यू। सॉल्व करने के लिए जस्ट वन Like it मिनट। has questions and formulas, graphs, tables, ऐसा कुछ दे रखा है. एक्चुअली दैट इज पार्ट ऑफ द ना कॉस्ट मैनेजमेंट। ये जैसे ईओक्यू या ईपीक्यू प्रॉपरली जैसे फॉर्मूला, ग्राफ और चार्ट के साथ ना, ये कॉस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है, ये आपका पार्ट नहीं है, है ना। सप्लाई चेन का, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का तो कतई पार्ट नहीं है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है ये जानना कि डिटर्मिनिस्टिक मॉडल लगता कहाँ है और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ठीक है। स्टिल मैं Okay. एक बार, मुझे 2 मिनट का आप टाइम दो, मैं चेक कर लेती हूँ कि इसमें क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ।
नहीं, इस पे एग्जाम्पल्स आपके सॉल्व करने को नहीं आएंगे, बट यू मे बी आस्क्ड टू गिव एग्जाम्पल ऑफ सम रियल वर्ल्ड केस स्टडी. ओके, ऑल दो सॉल्व करने तो नहीं आएगा आपको ये, बट स्टिल आप एक क्वेश्चन ना सॉल्व कर लो टू बी एट अ सेफर साइड. बट सॉल्व करने को नहीं आएगा. आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेकर आपको बताना होगा कि इफ दिस कंपनी इज यूजिंग ईपीक्यू, मतलब बेसिकली दे वांट टू नो कि डिटरमिनिस्टिक मॉडल का आपको समझ है, आपको पता है कि डिटरमिनिस्टिक मॉडल कब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ये चीज, मतलब दिस इज द थिंग दे वांटेड टू नो. बट स्टिल I'll just give you a case study. Okay, so calculate this one. Everyone, take a pen and paper and calculate this one. Ma'am, nothing is visible. No, I am not sharing anything. I'm just telling you to jot down the question I'm telling. You have to Okay. like write down the question I'm telling. This one. Okay, so let us consider, just note down the values I'm telling. Don't note down the whole question, note down the values I'm telling and try solving that. So it is an example of retail store that sells electronic gadgets. The store manager wants to determine the optimal order quantity for a popular model of smartphone given the following parameters. So the demand rate is given as 500 units per month. Okay. 500 units per month. The ordering cost per order is 50 rupees and the holding cost per unit per period is rupees 2 per month. So you have to calculate the EOQ. Can you repeat? Just 1 second, I'm repeating. Just 1 second. Just 1 second, just 1 minute. Give me 1 minute. So I'm providing you an example of the way you can get the question.
तो फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया है? I'm providing you the formula also. Just 1 minute. This is done. Thank you. Okay. Hello, Yes, yes. ma'am, you are not Um, audible, so I thought you are gone. no, I'm here. I was just preparing a question for you. I'm just showing you. I'm just showing you. Actually, I was preparing the question for you to show how you may get the question from this topic in your exam. I'm just showing you that one. Just a minute, it is done. Mm, So this is one. Okay.
So I guess it is done. Just 1 second. Close. ठीक है. So is for unit number 2. ठीक है. चलो. So yes, I was showing you this one. See, no. Just 1 second. There was some error with the um, actually, while writing the formula,
There is an error with this in Word. It is being merged with the other one. Okay, I guess now it is done. Where did you look at? Okay, it is done. Okay. So the screen is visible to you? Yes, ma'am. As I'm sharing a Word file. Yes, I'm sharing a Word file. See, actually, I was not able to write down the formula here in the Word file. That's why it took a bit longer. So the formula is EOQ. The formula is root under 2A. I was saying in some books you will be getting denotions as A and in some as D. D is basically the total annual demand. A I was saying to symbolize annual. Okay. So the annual demand, it is not monthly, it is annual. ठीक है? So the formula is 2A, or you may say 2D, that is demand. S, they are representing for ordering cost. You may say it as O also. Okay, so 2AO, C by I is the formula, or you may write it down as 2DS. S is the ordering cost per order. Please remember this. If you are remembering the formula, remember it properly, that the ordering cost is not in months or year, but it is per order. Okay. H is the holding cost, or you may say the carrying cost. ठीक है? Denominator में जो आ रहा है वो है holding या carrying cost. That is again per unit per year. Per unit per year. Okay. And you will be getting the answer in per order. Okay. So, like for example, we have taken the case कि your annual demand is 10,000 unit. Your annual demand is 10,000 unit and your ordering cost per order is 500. Okay. Your ordering cost per order is 500 and your holding cost per year. Holding cost का मतलब क्या है? Carrying cost. Carrying cost per year is ₹20 per year. So the formula. तो आपको annual demand पता था? कैसे पता था? How you were knowing about your annual demand? कैसे पता बिकॉज था ये आपको फिक्स्ड अपना? और प्रिडिक्टेबल होती है. हाँ, वेरी गुड, क्योंकि ये Determine फिक्स्ड और प्रेडिक्टेबल. हाँ, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल लगा रहे हो इसलिए आपको पहले से पता था. वेरी गुड. फिर आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले से पता है, होल्डिंग कॉस्ट पहले से पता है. आपने क्या किया? आपने फॉर्मूला में फिट इन किया. फॉर्मूला वाज 2 multiplied by the annual demand, that is here in this case 10,000, multiplied by the ordering cost per order. In our case the ordering cost is 500 per order. It is whole divided by the holding cost per unit per year. The whole is divided by the holding cost per unit per year. In our case the holding cost per unit per year is rupees 20. So
Now the answer comes, it 2 into 10,000 into 500 divided by 20, it is root under 5 lakh. And if you calculate the root, then it is coming as 707 units approximately, right? Approximately it is written because the units you can, just it cannot be in decimals, right? Okay. So what is the EOQ you are getting? 707 यूनिट्स. तो 760 यूनिट अगर आप डिमांड ऑर्डर करोगे ना, तो दैट विल बी द ऑप्टिमल ऑर्डर. वहां पे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होगा और आपका मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर, मतलब बेस्ट ऑर्डर जो है ना, वो 707 यूनिट ही है. ठीक है, इसको आप रीवेरीफाई कैसे कर सकते हो अभी मैं बताती हूँ. ठीक है, सबसे पहले आप बताओ, अगर 707 यूनिट अगर आप एक बार में ऑर्डर करोगे, इन वन गो, एक बारी में अगर आप ऑर्डर करते हो, तो कितना ऑर्डर करते हो? 707 यूनिट. तो इसका मतलब आपको एक साल में कितने यूनिट्स और कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा? हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू ऑर्डर? नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके कितने हो जाएंगे? एक साल में आपका 14 डिमांड 10,000 यूनिट. हाँ, यस. nothing, ma'am. So in one so annual demand is 10,000 and you are demanding 707 units in one order, then how many orders you have to make? So 10,000 divided by 707 will give you the number of orders. Everyone agrees with this, Yes. right? Okay, so 10,000 divided by 707, you are getting approximately 14.14 units. Means कम से कम आपको एक साल में 14 बार ऑर्डर करना होगा और हर एक ऑर्डर में 707 यूनिट मंगाने होंगे. और अगर आप ऐसा करोगे ना, तो ये आपका ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी होगा. ठीक है, अब लेट्स नाउ कैलकुलेट द टोटल एनुअल कॉस्ट. सो यू नो एनुअल कॉस्ट कैसे बनेगा? इन्वेंट्री का एनुअल कॉस्ट कैसे बनता है? बाय एडिंग अप ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट को जब आप ऐड कर देते हो तो क्या बन जाता है? टोटल कॉस्ट बन जाता है. ठीक है, तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या था? आपके 14 यूनिट आ रहे थे, है ना? ऑर्डरिंग सॉरी ऑर्डर, हाँ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 14 थे और एक ऑर्डर का दाम कितना था? एक ऑर्डर का प्राइस था 500 पर ऑर्डर पर ईयर, राइट? तो 14.14 will be multiplied by 500. And what was the holding cost? Holding cost was rupees 20, right? Holding cost was rupees 20 and number of units you were demanding was 707. So 707, it will be divided by 2. Then you get 353.3 and thus 7070. This is, and then the total cost you get is as 14,140 approximately. Okay. Yeah. Yes, it is 20 holding cost per unit per year. Okay. So the total cost approximately so the total annual cost associated with ordering and holding cost, if the company orders EOQ, अगर वो EOQ पे order करेगा, then his total cost will be 14,140. Now what you can do is you can take any other number, like let the annual demand be sorry, let the total EOQ आप 707 नहीं मानकर आप मानो, you may take it as 1,000. अगर आप सोचो कि अगर मैं अगर आप EOQ फॉलो कर रहे हो, then your total cost is coming as 14,140. However, if you are not going with the EOQ and you are demanding 1,000 units in one go, in one order, then how many orders you have to make? 10,000 divided by 1, 10. you have to make 10 orders. So 10 multiplied by number of orders will be 500. तो आपका हो जाएगा ordering cost आ जाए. Similarly आप holding cost निकाल लो, दोनों को add कर दो and then just check out if your to ordering cost is below 14,140. एक केस आप लो जिसमें
you are not following EOQ, but you are ordering just 500 units or 600 units. Okay, you are not following EOQ and you are taking 600 units, then take the ordering number of orders, multiply by the cost per order. Then similarly do for the holding cost, add these, and then get the uh, this one, then get the total cost, and then compare all these three cases. You will get to know that the case which in which you have followed the EOQ, that will be the best one, that will be the optimal, and the price will be lowest at that ordering quantity. Okay, so the price will be lowest at that ordering quantity. So thus it is generally advised to follow the EOQ as it helps to get you the best total optimal price for the order. Okay, and the formula remains same for EPQ. EPQ और EOQ में सिर्फ एक फर्क है कि आपका EOQ फॉलो होता है उन कंपनीज जो अपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, जो ऑर्डर करते हैं, और जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दे कैलकुलेट EPQ, और कोई फर्क नहीं है. ठीक है. Okay, I have also formulated a question which you may get. Okay, question, a type of question which you may get for this topic. So, okay, I forgot writing the question. No problem. Answers I have formulated here. So you may be asked to write what is deterministic model. So you have to write that deterministic inventory model. It is based on the assumption that all parameters such as demand, lead time, replacement time are all known and certain, and they do not vary over time. And these models are typically simpler and easy to apply because they rely on fixed inputs. Okay, and predictable outcomes. Then you have to write the application. You may write that these are used in situation where the demand and supply patterns are stable and predictable, and they are commonly employed in environments with consistent demand, short lead times, and reliable supply sources. Then you have to provide with the example. In example, you can show that economic order quantity model, where you can just take a scenario of a company. आप लिख सकते हो खुद से, a company manufactures electronic gadgets with a constant demand of 1000 unit per month. The ordering cost is 1000 per order. ये क्या कर रहे हो, ये आप खुद से एक एग्जाम्पल अज्यूम कर रहे हो और लिख रहे हो. ठीक है, तो आपने क्या किया, बताया कि एक साल का उनका जो ऑर्डर है 1000 यूनिट पर मंथ है. अगर अगर ये आपको पर मंथ में दिया है तो व्हाट यू विल डू, you will multiply by 12 and make it annual. क्योंकि फॉर्मूला क्या है, 2DS. D is the annual demand, right? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 1000 नहीं लिखोगे फॉर्मूला में, मल्टीप्लाई इट बाय 12. ओके, मल्टीप्लाई इट बाय 12. तो आप 1000 इंटू 12 करके इसको एनुअल डिमांड बनाओगे. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है, 1000 पर ऑर्डर है. होल्डिंग कॉस्ट इज गिवन एज ₹5 पर यूनिट पर मंथ. ये पर यूनिट पर मंथ पे ही रहेगा. ठीक है. Holding cost, no, it will also be multiplied to per annual holding cost. एक में ही हो जाएगा. Okay, so you have created a scenario. फिर आप अप्लाई करके बताओगे कि if the company is using EOQ model to determine the optimal order, then formula, you will just write down the formula. This was the error I was getting in writing with this one. यहाँ पे रूट नहीं आ पा रहा है ना, इस वजह से ये इशू आ रहा था. This will be this one, and here we will be having root. तो ये root नहीं लग पा रहा था word में, इस word file में. This was the error I was getting. ठीक है. Here will be having root. जो ये 2 लिख रहा है ना, it will be having root. Okay, तो फिर you have to just calculate कि D is 1000 into 12. Okay, ठीक है. S is 1000. S is the ordering cost. H is the holding cost. Okay. So 2 into 12,000 into 1000 divided by 5. Holding cost will not be multiplied for year. It will be per month only. And then you are getting the number of unit as 692.82.
Okay. So you can just show that this is the EOQ that the company is getting, and the company should order only 692 units to get the optimal order quantity, to get the minimum price. Okay. Similarly, reorder point model भी होता है, तो you can just show कि how reorder point model works. Okay, so it is not required, you can show up to this much. तो इस तरह करके कोई भी deterministic model का question आया तो you have to make the examiner understand what does it mean, where it is as applied, what are its assumptions. Properly आप heading दे दे के लिखना, properly utilize the sheet. Okay, पूरा अच्छे से while writing in the answer sheet you should utilize the sheet, like you should मतलब use the sheet to the like you should not make congested work. Okay, you should like write in an open manner, write one question in one page. If the question is done and half of the page is left, don't start the next question from the same page, leave the page and then start the question from a fresh page. Okay, leave enough spaces so that it is properly readable, your answers are readable and it is uh, understandable. Okay, so don't make a congested way, write pura fela ke and have your own matlab writing pattern, have the headings and write the points properly, है ना, so that it is understandable in a easy way. क्वेश्चन जो चेक कर रहा है उसको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आपका आंसर रीड आउट करने में, ठीक है. So make them understand the meaning, the assumption, the application, and you may give an example as well. Okay, then similarly for probabilistic model, this is one which we have not discussed yet. So probabilistic model I'll be discussing, and the real world scenario also I have taken for the deterministic model. So for the deterministic model, I just have written that a large automobile manufacturer with a stable demand for car parts. It has a stable demand for the car parts, है ना? So this can be used in these companies also because it has a stable demand. So the company can utilize the EOQ model to determine the optimal production lot size for each part to minimize the total cost of production, the setup cost and the holding cost. So this is what you can just write down a real world scenario and just give an example ki there is a company which has a stable demand for this and thus it can use EOQ to have the optimal production lot size to minimize the total cost, setup cost, holding cost and this one. Okay, so this way you can just write down. So we have discussed the deterministic model till now. Next, we are going to discuss probabilistic model. Okay. So EOQ is done. EPQ is also done. Now we are moving to probabilistic model. So probabilistic model from the word itself, you can just guess that this model is based on the assumption that the demand or the lead time or the cost is not properly known and determined and defined. It is probable, है ना. तो ये किस टाइप के प्रोडक्ट में होता है, तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल इज बेसिकली इन द यूज्ड इन द सीजनल प्रोडक्ट्स, है ना. सीजनल प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं जहां पे कि आपकी डिमांड फिक्स नहीं है ना, जहां पे डिमांड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो सकता है, लीड टाइम में फ्लक्चुएशंस हो सकता है, उन सारी सिचुएशंस में प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल यूज होते हैं. इसमें इन प्रोबेबिलिस्टिक आल्सो यू हैव टू स्टडी टू, सिंगल पीरियड एंड मल्टी पीरियड. सिंगल पीरियड का मतलब क्या है कि वो बिजनेस जो होगा वो एक ही साल में एक ही बार होगा, है ना, या कुछ ऐसा चीज है जो कि सीजनल टाइप के होते हैं जो एक ही बार होता है ना. तो टिपिकली जो पेरिशेबल या सीजनल आइटम होते हैं उनमें ऐसा होता है कि जो डिमांड होते हैं वो अनसर्टेन या वेरी करते हैं. तो इन सारे सिचुएशंस में या इन सारे केसेस में जो लगता है वो होता है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, ठीक है.
तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि यू डोंट एग्जैक्टली नो द डिमांड, यू डोंट एग्जैक्टली नो द लीड टाइम, और आप चीजों को एग्जैक्टली नहीं जानते हो तो इट इज डिफिकल्ट टू गिव अ प्रॉपर फॉर्मूला, है ना। जैसे ईओक्यू का एक प्रॉपर फॉर्मूला है, उस तरह प्रोबेबिलिस्टिक का एक प्रॉपर फॉर्मूला देना थोड़ा मुश्किल है. दैट इज वाई there is no proper formula given for probabilistic model, but yet are strategies that are given for probabilistic model. तो single period model क्या होता है? Single period model are the model where which is used for one time decision. मतलब अगर जैसे EOQ हो गया, EOQ में आपने अगर डिटरमाइन कर लिया कि 707 यूनिट एक बार में ऑर्डर करना है, तो साल में 14 बार ऑर्डर करना था ना, और 14 टाइम्स, ऑल द 14 टाइम्स यू आर जस्ट ऑर्डरिंग 707 यूनिट्स बिकॉज दैट वाज रिपीटेटिव एंड एवरीथिंग वाज नोन, है ना. जबकि प्रोबेबिलिस्टिक और स्पेशली जो सिंगल पीरियड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है वो ये कह रहा है कि आपको हर बारी नया कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर बारी आपको नया इन्वेंटरी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस बारी कितना मंगाया जाए, क्योंकि हर बारी का डिमांड सेम हो ये कोई जरूरी नहीं है ना. तो ऐसा कब होता है? जो सीजनल प्रोडक्ट होते हैं या फिर पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं उनमें ऐसा होता है कि हर बारी डिमांड मार्केट का सेम नहीं आता, इसलिए हर बारी आपका इन्वेंट्री डिफरेंट हो सकता है, इसलिए हर बारी आपको इन्वेंट्री जो है एक नया कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड द कैलकुलेटेड विल नॉट गो गुड फॉर द नेक्स्ट पीरियड ऑल्सो. ठीक है, तो हर बारी के लिए एक नया कैलकुलेट करना होगा, उसी को तो क्या कहते हैं? सिंगल पीरियड मॉडल. सो सिंगल पीरियड मॉडल्स आर यूज्ड फॉर वन टाइम डिसीजंस, typically for the perishable and seasonal items where demand is uncertain and it varies. So these models help in making decisions about how much inventory to order for a single selling season or period. Okay, for a single selling period. Okay. And what is the primary goal? The primary goal is to balance the cost of overstocking, मतलब excess inventory, या फिर understocking, missing out potential sales. तो probabilistic model में वही है कि ये सिर्फ एक तो चीजें डिटरमाइंड नहीं है पहले से, दूसरा सिंगल पीरियड जब यूज हो रहा है मतलब इसमें जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी फॉर्मूला या मॉडल यूज किया जाएगा कैलकुलेशन के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ कब तक काम करेगा? एक सीजन के लिए काम करेगा. ठीक है. एक एग्जांपल जो हमने न्यूज वेंडर मॉडल का लिया था, तो दिस इज जैसे कि ईओक्यू वाज एग्जांपल ऑफ डिटरमिनिस्टिक, सिमिलरली न्यूज वेंडर मॉडल इज एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल. ठीक है, तो ये सिंगल पीरियड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का एक एग्जांपल है जिसमें क्या होता है? डिसीजन मेकर जो होता है वो डिटरमाइन करता है ऑर्डर क्वांटिटी को. ईओक्यू में क्या हो रहा था? ईओक्यू में भी ऑर्डर क्वांटिटी डिटरमाइन हो रहा था, है ना, to maximize the expected profit and minimize the expected cost. The model considered the probability distribution. ये मॉडल का फॉर्मूला कोई EOQ के फॉर्मूला की तरह आसान नहीं होता है, डिटरमाइन नहीं होता है, बल्कि इस फॉर्मूले में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाता है क्वांटिटी फोरकास्ट करने के लिए, एंड देन कंपेयर द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएटेड विद द डिफरेंट ऑर्डर क्वांटिटीज. इसका मतलब क्या है कि in the probabilistic model, especially the single period probabilistic model, here you have to calculate the probability distribution. डिमांड का कैलकुलेशन, डिमांड फोरकास्टिंग के लिए आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन करोगे, एंड देन आप जैसे आपने डिमांड फोरकास्ट किया, दैट डिमांड इज नॉट एग्जैक्ट, आप डिमांड फोरकास्ट करें कि हो सकता है कि 800 यूनिट विल बी अ गुड क्वांटिटी, तो आप क्या करोगे? एक बार आप 800 लोगे, एक बार आप 700 लोगे, एक बार आप 900 लोगे, तीनों लेकर के फिर आप कैलकुलेशन करोगे और सिनेरियो एनालिसिस करोगे तीनों की, एंड देन यू विल बी चूजिंग द बेस्ट वन. ओके, तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल ऐसा होता है. और क्या ये दोबारा यूज हो सकता है फॉर अनदर ईयर, फॉर अनदर पीरियड? नो. प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में सिंस द डिमांड इज फोरकास्टेड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पीरियड, दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, देयरफॉर इट एक्सपायर्स विद एवरी next season. Okay, I guess it is understandable. Next is
प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल मल्टी पीरियड। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल मल्टी पीरियड में क्या हो रहा है कि इन्वेंट्री डिसीजन जो आप ले रहे हो ना कि कितनी ऑर्डर क्वांटिटी करे, ये आपका ना एक बार डिसीजन लोगे ना तो कई बारी वो काम आ जाएगा, मल्टीपल टाइम पीरियड में वो काम आ सकता है, ठीक है। क्योंकि 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 जो चेंजेस होगा ना डिमांड में वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, देयर विल बी चेंजेस इन द डिमांड फोरकास्टिंग, दैट इज द रीजन वी आर नॉट यूजिंग डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, वी आर यूजिंग प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। लेकिन जो चेंजेस होगा ना एक पीरियड से दूसरे पीरियड में वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, वो इतना होगा कि आप थोड़ा बहुत रिवीजन कर दोगे उसमें अपने डिसीजन मेकिंग में, तो वो सेम जो आपने अपना स्ट्रेटेजी या सेम आपने जो कैलकुलेशन किया वो दूसरे पीरियड में भी काम आ जाएगा। ऐसा जनरली कब होता है, ऐसा जनरली उन बिजनेस में होता है जिन बिजनेस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आता है, ऑल्दो वो है सीजनल टाइप के बट उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस एक पीरियड से दूसरे पीरियड में नहीं आता है, स्टेबल रहता है। ओके, सो मल्टी पीरियड मॉडल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इन्वेंटरी डिसीजंस ओवर मल्टीपल टाइम periods, and these models are suitable for environments where demand, lead time and all other parameters they may vary over time, but the strategies for multi-period inventory management, it includes it can be applied to many periods, and it basically include, इसमें इसका एग्जांपल क्या, इसमें क्या होता है ना बेसिकली कि एक पीरियड में आपने कैलकुलेट कर लिया, आपने ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लिया कि हाँ भैया ये ऑर्डर क्वांटिटी इज द बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी दैट कैन बी यूज्ड फॉर ऑर्डर्स इन द कमिंग पीरियड, है ना। लेकिन टाइम टू टाइम आपको ना उसको रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। टाइम टू टाइम उसको आपको कंटिन्यूअस रिव्यू सिस्टम या पीरियडिक रिव्यू सिस्टम, या तो होना चाहिए कि हर 2 महीने बाद इसका रिव्यू होगा या हर सीजन रिव्यू होगा, है ना। चेंज पूरा नहीं होगा, रिव्यू होगा, या फिर कंटिन्यूअस रिव्यू सिस्टम होना चाहिए। So probabilistic model are used in those types of organizations where the variables like these are demand and lead time, they are not fixed, but they can be, once they are calculated, can be used in multiple period. Okay, so ये हो गया आपका प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल मल्टी पीरियड। इसका एग्जांपल जो हमने दो लिया वो एक था पीरियोडिक रिव्यू और कंटिन्यूअस रिव्यू। पीरियोडिक रिव्यू का मतलब होता है कि मंथली या वीकली उस पूरे जो आपने बनाया है, क्या बनाया आपने, आपने क्या बनाया है, यस आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, सॉरी आप पीपीटी में से पढ़ा रहे हो, मतलब पीपीटी तो कोई शो नहीं हो रही। ओ माय गॉड, हाँ मैं पीपीटी से पढ़ा रही थी। It is visible now. यस मैम। Okay. So we were just discussing कि periodic review ये probabilistic model क्या है। I guess PPT visible नहीं था but समझ तो आप लोगों को जरूर आया होगा कि probabilistic model जो है वो सबसे पहले what we are trying to calculate, we are trying to calculate the order quantity, है ना। We are trying to calculate, we are trying to manage the inventory, right, है ना। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि कितनी इन्वेंट्री को रखना है हमें अपने वेयर हाउस में, कितने इन्वेंट्रीज को हमें ऑर्डर करके मंगाना है, कितने इन्वेंट्रीज को हमें बनाना है ना। तो इस वजह से हमने जो दो मॉडल जो डिटरमाइन किया वो था डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक वो सारे उसी ऑर्गेनाइजेशन उसी सिचुएशन में काम आएगा जहां पे डिमांड वगैरह जो है वो फिक्स्ड रहेंगे, ठीक है। ये तो एक बात हुई। दूसरा हमने जो डिस्कस किया वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल डिस्कस किया। प्रोबेबिलिस्टिक मतलब ये सारे वेरिएबल जो है ना, कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आप सोचो जिनमें जो डिमांड है ना वो चेंज होता रहता है, स्पेशली द फैशन इंडस्ट्री, इसमें डिमांड काफी चेंज होता है, ठीक है। ये काफी फेस्टिव्स अकॉर्डिंग चलता है, फेस्टिवल्स में इनके डिमांड काफी राइज होते हैं और अदरवाइज देन नॉर्मल रहते हैं ना। तो ये फेस्टिव अकॉर्डिंग चलता है, तो ये पीरियोडिकल मतलब ऐसा रहता है ना। तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल इनमें लगता है बिकॉज इनका डिमांड फोरकास्ट करना इजी नहीं है ना। तो इसमें प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल लगाते हैं। तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में आई जस्ट टोल्ड यू कि हाउ दे आर कैलकुलेटेड, देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मूला एज we have in the EOQ model where the formula was fixed. We in the probabilistic model the formula is not fixed yet. कोई तो तरीका होगा, यस तरीका है कि आप क्या करो, डिमांड फोरकास्टिंग के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करो और फिर सिनेरियो एनालिसिस करो, ढेर सारा सिनेरियो बनाओ और फिर उनमें से कंपेयर करके बेस्ट निकालो, ठीक है। उसके बाद ये बात हो गई। फिर बात हुआ कि इसमें कुछ कुछ तो ऐसे डिसीजंस होते हैं जो आप एक बार ही ले लो तो इट कैन गो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
कुछ ऐसे जो सिंगल पीरियड वाले जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही बार वो मतलब आपको डिसीजन लेना है एंड देन दैट डिसीजन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ऑल अदर सीजन्स, तो उसको कहते हैं सिंगल पीरियड। जिसमें दूसरा होता है मल्टीपल पीरियड, जिसमें मल्टीपल टाइम्स आप उसको उस डिसीजन को यूज कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसको पीरियडिकली या कंटिन्यूअस रिव्यू करते रहोगे, है ना। तो पीरियोडिक रिव्यू में क्या होता है, पीरियोडिक रिव्यू में क्या होता है कि आपके वो जो डिसीजन आपने जो लिया, डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट, डिसीजन रिगार्डिंग द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो डिसीजन यू हैव टेकन इट कैन बी periodically reviewed, the period may be weekly, the period may be monthly, तो ऐसे करके आप रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो कंटिन्यूअस रिव्यू होता है। कंटिन्यूअस रिव्यू में क्या होता है कि इट इज कंटिन्यूअसली रिव्यूड, मतलब वो हमेशा ऑल द टाइम द चेक इन इज डन so that it does not miss. Okay, so inventory in continuous review system, inventory is continuously monitored and orders are placed when inventory reaches a predetermined order point. जैसे वो predetermined order point benchmark पे पहुंचता है, वो वापस से जो है उसको उसका रीऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है एंड देन इट इज डन। तो क्या डिटर्मिनिस्टिक मॉडल या प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल दैट वी आर स्टडीइंग इज यूज्ड जस्ट टू कैलकुलेट ईओक्यू? No, it is used to calculate all the things that are related to inventory management. Like for example, reorder quantity, कितने quantity पे आपको reorder करना है वो भी आपको deterministic या probabilistic model से निकालना है। जिनके तो inventory या जिनके तो demand आपको पहले से पता है उसमें आप deterministic वाला कोई मॉडल यूज कर लो, ठीक है। जिनके तो आपको डिमांड नहीं पता है उनमें आपको प्रोबेबिलिस्टिक वाला मॉडल यूज करना है। तो these deterministic and probability model are the models of inventory management that are used to manage the inventory, all the activities that are related to inventory management, for example the ordering quantity, the reorder point, and all these things are taken care। लेकिन दो तरीके जो है वो तरीकों का सिचुएशन और अजम्पशन डिफरेंट है। अजम्पशन डिटर्मिनिस्टिक का है डिफाइंड वेरिएबल, और प्रोबेबिलिटी का है कि the variables are not defined। And with this we have completed our unit number 2. If you have any issue with unit 2 you can just ask। मैम ये प्रोबेबिलिटी वाले के Probabilistic, अंदर, हाँ। हाँ जी मैम, इसके क्वेश्चंस पे क्योंकि बुक में देखा था बड़ा मुश्किल से थे, मतलब सिग्मा वगैरह डिफरेंट सिंबल्स थे। No. See, तो I've already आते हैं told you, इनको? I've already told you this probabilistic का कैलकुलेशन करना या रीऑर्डर का कैलकुलेशन करना या ईओक्यू का कैलकुलेशन करना, ये सारे कैलकुलेशन जो है ना ये कॉस्ट मैनेजमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता है। लेकिन सप्लाई चेन मैनेजर को इतना पता जरूर होना चाहिए कि क्या मॉडल्स लगेंगे, हमें मॉडल्स का नॉलेज होना चाहिए, हमें फॉर्मूलाज तो और बुक के क्वेश्चंस अंदर नहीं तो बनाने। क्वेश्चंस दे रखे हैं हाँ, इन मैनेजमेंट वाले बुक में, सब बुक इन में ही। नहीं, इन बुक दे मे हैव गिवन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अच्छा, मेरा बुक नहीं है ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बुक में दिया होगा, बट क्वेश्चन डोंट एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दोस। क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन ओके वाले नहीं आएंगे, ठीक है। ओके दैट इज वेरी क्लियर, क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी आपको हालांकि सिंपल कैलकुलेशन जैसे ईओ क्यू हो गया या ये हो गया, तो हाँ आपको हाँ सिंपल कैलकुलेशन पता होने चाहिए। बाकी आपके सिग्मा ये वो वाले कैलकुलेशंस नहीं आएंगे, क्योंकि यू आर नॉट स्टडिंग द कॉस्ट मैनेजमेंट पेपर, यू आर स्टडिंग द सप्लाई चेन मैनेजमेंट पेपर। तो मैंने अभी ओके। ईओ क्यू वाला दिखाया था, एक बार मैं प्रोबेबिलिटी वाला भी दिखा देती हूँ। क्वेश्चन इन द सेंस किस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सपेक्ट करने हैं। सेम है जो मैंने इसके लिए आपको दिखाया। हाँ, प्रोबेबिलिटी के ये क्वेश्चन है। यू मे बी आज द डेफिनेशन कि क्या होता है प्रोबेबिलिस्टिक, मतलब प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री का मतलब प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल, हम इट पीपीटी में कंसिडर द कितने हैं? अनसर्टेनिटी एंड द वेरिएबिलिटी इन डिमांड, लीड टाइम एंड ऑल Yes, दिस। सो एप्लीकेशन, माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल। no, ma'am, your screen is not visible. अच्छा, ठीक है, आप लोग बता दिया करो, है ना। पता नहीं, शायद स्विच करती हूँ ना तो ये हो जाता है, शेयरिंग बंद हो जाता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री में आपसे क्या सवाल पूछा जा सकता है? यू मे बी आस्क्ड टू राइट अबाउट द प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल।
ठीक है. So you can write that probabilistic inventory model, it considered uncertainty, variability in demand, lead time and all other factors. So these models incorporate probability, statistical distribution to account for the fluctuation in inventory parameter. फिर आपको लिखना है ये अप्लाई कहाँ होता है, ये अप्लाई होता है हर उस जगह जहाँ पे सप्लाई और डिमांड अनप्रिडिक्टेबल है या वेरिएबल है, वेरिएबिलिटी है. ठीक है. फिर आपको एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि एक ये मैंने बताया है, आपको ये थोड़ा ध्यान रखना होगा. न्यूज वेंडर मॉडल है, जैसे उसमें ईओक्यू मॉडल था ना, आपको इसमें प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में न्यूज वेंडर मॉडल है. न्यूज वेंडर मॉडल बेसिकली जो है ना ज़ारा वगैरह यूज करता है. तो क्या सिनेरियो, जैसे आप ले रहे हो कि एक फैशन रिटेलर है जिसके सीजनल क्लोथिंग होते हैं, ठीक है, गर्मी के क्लोथिंग या सर्दी के कपड़े आते हैं, तो उसमें जो सर्टेनिटी है ना वो अनसर्टेन डिमांड है. सो द रिटेलर वांट्स टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी फॉर अ न्यू लाइन ऑफ जैकेट्स. तो इसमें ये जो है रिटेलर जो कि ये जैकेट्स बेच रहा है वो क्या कर सकता है. सो द रिटेलर कैन यूज द न्यूज वेंडर मॉडल which balances the cost of ordering too many jackets, that is overstocking, against the cost of ordering too few, that is understock. understock या overstock से बचने के लिए वो क्या करता है, न्यूज वेंडर मॉडल को यूज करता है. सो न्यूज वेंडर मॉडल में क्या होगा, इफ द डिमांड फॉलोज अ नॉर्मल, अगर डिमांड तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो with a mean of 500 units and standard deviation of 100 units. मीन क्या होता है, मीन मतलब आपका एवरेज होता है ना, और स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब रिस्क होता है. स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया 100 यूनिट्स, इसका मतलब या तो ये 100 यूनिट्स बढ़ जाएगा या 100 यूनिट्स कम होगा, लेकिन इससे ज्यादा का फ्लक्चुएशन नहीं आएगा. इसका मतलब यहाँ जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन 500 यूनिट्स था, इसका मतलब कि इस जैकेट कंपनी जो है, ये स्टोर जो है, ये नॉर्मली तो इसको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 500 यूनिट, हाउएवर स्टैंडर्ड डिवीएशन 100 है. इसका मतलब फ्लक्चुएशन अगर होगा तो वो या तो 600 यूनिट डिमांड होगा या तो 400 यूनिट डिमांड होगा. कभी ऐसा नहीं होगा कि 200 यूनिट्स डिमांड है या 1200 यूनिट्स डिमांड हो गया, नहीं. या तो वो 600 डिमांड आ जाएगा मार्केट में या तो 400 आ जाएगा. हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि डिमांड कितना होगा, इसीलिए तो वी आर नॉट यूजिंग डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, इसीलिए तो वी आर गोइंग टू यूज प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल. तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में हमें मीन पता रहता है, मीन मतलब एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब फ्लक्चुएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस दोनों में होता है, प्लस 100 माइनस 100, मतलब 500 से आप प्लस 100 कर लो, 500 से माइनस 100 कर लो, तो कितने सीन्स क्रिएट हो जाएंगे, कितने सिनेरियोज आ जाएंगे, 3 सिनेरियोज आ जाएंगे, जिसमें आप एक में 500 यूनिट मानोगे आपका डिमांड हो रहा है, दूसरे में आप मानोगे 600 यूनिट डिमांड हो रहा है, तीसरे में आप मानोगे 400 यूनिट डिमांड हो रहा है. ठीक है. एंड द कॉस्ट ऑफ ओवरस्टॉकिंग इज 50 पर यूनिट. अगर ओवरस्टॉकिंग हुआ तो खर्चा कितना बढ़ेगा, 50 रुपए पर यूनिट से बढ़ेगा, और अगर अंडर स्टॉकिंग होगा तो 100 रुपए पर यूनिट से बढ़ेगा. तो क्रिटिकल रेशियो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, तो क्रिटिकल रेशियो नॉर्मली कैलकुलेट ऐसे होता है, डबल आ गया है, अंडर एज कॉस्ट, ओके. सो अंडर एज कॉस्ट और ओवर एज कॉस्ट मतलब 100 प्लस 50 है ना, और क्रिटिकल रेशियो आपका हुआ अंडर एज प्लस ओवर एज कॉस्ट. एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है. ओके तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना. दैट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि यू विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जाम टू कैलकुलेट एनीथिंग. This is not a cost paper, this is a supply chain management paper where you need to know कि होता क्या है, मॉडल्स कौन से है, ये मॉडल का नाम आपको यूज करना इज इम्पोर्टेंट, बट कैलकुलेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट. यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में बस ये बताया है कि क्रिटिकल रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हो, कि ये भी गलत हो गया है, कुछ इसमें गड़बड़ है. ठीक है.
is not required. You just have to tell ki if the standard deviation is 100 units, that means 3 scenes will be created. Three scenario analysis will be done by the supply chain manager. क्या करेगा, एक 500 यूनिट पे करके देखेगा, एक 600 पे, एक 400 पे, और उसमें से जिसमें ऑप्टिमल कॉस्ट आएगा that will be selected, that number of units will be selected for the order. Okay. सिमिलरली यहाँ पे एक कंटिन्यूस रिव्यू मॉडल के बारे में बताया गया है कि कंटिन्यूस रिव्यू मॉडल जो है दैट इज आल्सो बीइंग यूज्ड एंड दैट्स इट. ठीक है, दैट इज इट. यही है, आपको बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ खासा नहीं पढ़ना है. So, ma'am, in the exam, we can get questions on both these, probabilistic and deterministic, or either one. या दोनों मॉडल आ सकते हैं. See, your question will be 12.5 marks, है ना? So the question needs to be it needs to have so मतलब it needs to have some weightage, no? It needs to have the answers. तो सिर्फ अगर आपसे पूछता है ये deterministic, तो you will not be able to write for 12.5 marks, right? So I guess the question will be in parts. Okay, the question will be in parts like what is deterministic, where it is applied, and compare the deterministic and probabilistic or something like that. Matlab question will be in parts so that you get enough material to write for 12 and to justify the 12.5 marks. Okay. तो मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसे से नहीं रहेंगे कि you have to write the all the other stories. Questions will be such that you will be having enough material to write and justify the question. Okay. So you can't leave anyone. That is the whole idea. You can't leave anyone, है ना? जब क्वेश्चन पार्ट्स वाले आते हैं ना, तो आप किसी भी पार्ट को, किसी भी सिलेबस के पार्ट को छोड़ नहीं सकते, because if you leave one, the other will be attached to the one. Okay. तो आप ना ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप डिटरमिनिस्टिक पढ़ोगे तो प्रोबेबिलिस्टिक नहीं पढ़ोगे, है ना? Expect both. I don't know which will be asked, but it may be asked. It is like probable to be asked in a integrated way. Okay. मैम बुक में एक और टॉपिक भी दे रखा है, सिलेक्टिव इन्वेंटरी कंट्रोल. तो Selective inventory control सिलेबस में है. Yes, ABC analysis. मैम ये बुक में दे रखे हैं. बुक पे दे रखी, सिलेबस में तो नहीं है ना, आई गेस. नहीं मैम, इवन बुक में सिलेबस वो में नहीं है तो मल्टी पीरियड वाला नहीं दे रखा, बट वो सिलेबस में है. हाँ. Then actually I am very strict to the syllabus. In class also I used to visit the syllabus number of times, so I am very strict to the syllabus. And आप लोग भी आराम से रहो कि if you are completing the syllabus, no need to worry. और जो syllabus के बाहर है ना, that will not be asked. Stick to the syllabus, and I am stick with the syllabus, so you will not be asked any question out of the syllabus. तो एक टॉपिक भी जो अगर ऐसा है ना कि जो बुक में कवर्ड है बट सिलेबस में नहीं था और वी हैव नॉट कवर्ड, देन डोंट रीड दैट. नो नीड टू रीड दैट. Still, if you want, I can do that, but that will not be asked in exam. For exam purpose, it is not required. ओके मैम. Yeah. So be relaxed for that, but complete all those that we are doing in the class. Okay. So chapter number 2 is done. Take a break of 5 minutes. It's 2:15 now. We can meet at 2:20 and start again. 2:20, 2:25. Okay, 2:25. Take a break of 10 minutes. We'll start again and do chapter 3, 4, 5 in one go, and then. Okay. All right.
क्लास होगी या नहीं, किसी को पता है? So welcome back. So we are done with unit 1 and 2. Continuing with unit 3. So I'm sharing my screen again. Please let me know if it is visible. It is visible. Visible, okay.
So I've opened my PPT. I guess it is visible. Can I continue? Ma'am, I want to ask. Yes. Yes, Shivangi, yes. Ma'am, I want to ask you which syllabus you are following, the detailed one that SL shared. Yes, the syllabus is shared by SOL only. This one. I'm just showing you Okay, ma'am. this one. I just have screenshot my own syllabus, my own papers. So this is the syllabus I have, and this is the one I am following. I guess this is the one I have been shared by the SOL admin also. This is the same for Okay, everyone. ma'am. Okay, ma'am. Thank you. आप लोग के पास भी सेम है ना और इट इज डिफरेंट? मैम एक्चुअली वो बहुत पहले शेयर हुआ था, उसमें सब्जेक्ट थोड़े ज्यादा थे, तो मुझे लगा कुछ चेंजेस ना हो इस सिलेबस में। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। अच्छा, नहीं नहीं, तो आई जस्ट वांट कि सबके पास यही है ना, मतलब दिस इज द करेक्ट वन वी आर गोइंग, नो? I guess Ma'am, this is the one. This is the correct one. Reason being, कि I have also written this paper, and I'm following this syllabus only. so So this, basically we have a detailed version and we can't see the contents in this because we have 9 units in this as well. you can't see the content. Okay, here is the content. Can you open the syllabus? Yeah. Yes, it is there. I have opened. Is it not visible to you? Shall I Only No, the reshare? ma'am, it's not. Not visible. Visible. Yes, no, it is visible. No, no, no. No, ma'am. No, okay. I'm Only the resharing again. I'm resharing. I'm resharing. I'm stopping the share, resharing the window again. So this is the window where I have opened my syllabus. This is the syllabus of supply chain Now it's management. visible, ma'am. ठीक है, ठीक है. Just check that you have the same content in your syllabus as well. Okay. Can you scroll down, please? Yeah, please. Okay. It's the same. Same. Okay, thank you. So yeah, so we are going with the correct syllabus. I am opening unit number 3 and I have opened my PPT. Is it visible to you all? Not yet. No, Ma'am. Not yet. Do I need to reshare? Sorry, your voice is breaking in between. I'm resharing my screen again with the PPT. And here I have opened the PPT on my screen. It is visible to you. Yes, ma'am. yes, ma'am, it's visible. Okay, okay, thank you. So in unit 3, we have to study the how we can manage this risk and uncertainty that is there in the supply chain. So the very first question is there any risk attached to the supply chain? Yes, there is risk attached to the supply chain. See, if the supplier is not able to supply the quality that we have demanded, then it can ultimately lead to dissatisfaction of the customer and the brand reputation may be lost.
If the supplier is not able to supply within the scheduled time, then also that can lead to bad reputation, and that can lead to that can also lead to a non-fulfillment of the promised time and promised scheduled delivery. Okay, so there are many risks which are attached to the supply chain, and these risks need to be mitigated and managed so that the brand reputation cannot be lost and the customer value can be maintained. Okay, so also this the risk related to the demand forecasting. Okay, the risk related to the location as well. So all these risks are there in the supply chain which need to be managed to have a smoother supply chain and ultimately lead to the good reputation of the company and satisfaction to the consumer. Okay, so we need to understand what are the risks attached to the supply chain. So the very first risk attached to the supply chain is related to the supplier reliability. Supplier reliability means if the supplier is reliable enough or not. So shall we deal with that supplier or not? So you need to, before providing the order to the supplier or before choosing a supplier, the organization or the supply chain manager need to be uh, very prominent enough to determine whether the supplier is reliable. How can he do? He can just collect his history and analyze and understand whether the supplier that he is choosing is providing, has always been providing, is able to meet the promised time, is able to meet the promised quality, and is flexible enough that if there is any fluctuation or if there is any variability or if there is any change in the market demand, then the supplier is able to be responsive enough to the change. So all these things are being tested and understood by the supply chain manager. So selecting the supplier is one very vital thing that needs to be done. And this, there is a risk that the supplier, if the supplier is not reliable, then the whole supply chain can be disrupted and destroyed. Because if the supplier is not able to supply the production, the good, then how can it be supplied to the ultimate consumer within the scheduled time? So the supplier reliability is a risk which need to be properly dealt and understood. Okay, so the risk that is associated with the supplier's ability to deliver quality products or services within the required time frame. Okay, so the quality that he has been ordered, if he is able to provide that, and the time frame that is given to him, if he is able to meet up with the within the given time. So these are the two risks associated with the supplier reliability, and this can actually, this the supplier is not able to provide within the given time frame, or is not able to provide the not able to deliver the quality product, then the whole supply chain can be disrupted and the entire supply chain can suffer, and it can ultimately affect the customer satisfaction. So supply reliability is a typical risk for the supply chain which needs to be considered well. The next risk is demand variability. Actually, it is very difficult to forecast the accurate demand. There is always a fluctuation in customer demand, as the customer demand is affected by many of the internal and external factors. His taste, preferences, choice, economic factors, and all many other factors are being affected, and thus there is always a fluctuation in customer demand. And this fluctuation, it can lead to inventory imbalances. At times, the customer can demand a huge quantity that can lead to understocking, and at times, if the customer does not demand, then that can lead to overstocking of the good. So
Fluctuation in customer demand, it can lead to inventory imbalances, it can lead to production delays, it can also increase the carrying cost, right? So forecasting the demand accurately is crucial to mitigate this risk, right? Next is market dynamics. So the market is very dynamic. It is being affected by many factors. Some of the external factors also affect, like the economic condition, like the geopolitical events. If there is any war in the country, if there is any change in the market preferences, they can also lead to uncertainty affecting the procurement. Procurement means to receive the supply of the raw material. Okay, so for example, if your supplier is from Iran or Iraq, which is right now suffering with this war, then the organization which has its supplier in those countries can be affected, and his production may be affected, his procurement may be affected, and thus he may not be able to meet up with the demand, and thus his whole supply chain may be disturbed. So you can just see that the supply chain has this risk also. The market dynamics risk is also there with the supply chain. Okay, so the three major risks associated with the supply chain is, the first one is the supplier reliability, next is the demand variability, the demand may vary, and the market is very dynamic. So these are the three main risks associated. Next is, so you have understood the three main risks associated with the supply chain. Now we will be discussing of the strategies. How can we meet up with those risks? How can we mitigate those risks? How can we minimize those risks? So there are few strategies that the supply chain manager can adopt to mitigate those types of risk. Okay, so the first strategy is quick response strategy. Quick response strategy says that you should be quick enough to respond to the चेंजिंग मार्केट. ओके, तो रिस्क क्या था? रिस्क ये था कि मार्केट बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है. रिस्क ये थी कि डिमांड बहुत ज्यादा वेरी करता है. रिस्क ये थी कि सप्लायर रिलायबल नहीं है. तो इन सबको मीट करने के लिए एक जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है उसको कहते हैं क्विक रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी. क्विक रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी ये कहता है कि अगर इफ द सप्लायर और इफ द सप्लाई चेन मैनेजर इज क्विक in responding to the market, in responding, like external factors आया, ईरान और इराक में आपके suppliers थे, and if those suppliers are not able to supply you the goods, then you should have some alternative, or you should have some quick response strategies to have some alternatives to the problem. Okay, so quick response strategy दो चीज कहता है. First thing is collaborative partnerships. Quick response strategies strategy suggests that you should have collaborative partnership. The supplier should not be an external party. The supplier should be made, should be your partner. They should be made, they should be collaborated. We should collaborate with our suppliers and we should make partnership, because if you build a partnership with the supplier or the distributor or the logistic, then that can help you in providing them and yourself also, the organization also, to get the seamless flow of information. If the information, like if you get the pre-handed information that there may be war, because the suppliers sitting over there in Iran and Iraq, they may get those symbols that there may be war. So in those case, if those suppliers are your collaborators or supplier, they are not your external party, then those suppliers, they will automatically inform you, provide you the information that yes, there seems to be some war in the coming period of time, so you can get on with some other supplier. Okay, you can see for some other substitutes. Okay, so that is the reason it is saying that the first strategy that the supply chain manager must take on is to have a quick response strategy. That is, it can do is it can build a collaboration with the partnership, a collaboration with the suppliers, with the distributors, so that the information can flow easily and transparently. The materials and all the things can be quickly adjusted to the requirement. Okay, the next is agility and responsiveness. It is saying that the supplier, that the
supply chain managers should be very agile. Agile means should be very quick, should be very responsive to the changing market demand patterns. Okay, so to the changing market demand patterns, and thus adjust to the production and distribution, and thus reduce to the lead time. Ye jet, ye six sigma, all these, how can they be applied? They can be applied only when you have collaboration with your this one suppliers, or your suppliers are very agile and responsive and responsible, then only you can apply JIT in your supply chain. So the first strategy that the supply chain manager can use to mitigate the risk is to have a quick response strategy where they can either collaborate with the partnership, or they can be very agile and responsive. Okay, the next strategy that is suggested is postponement strategy. So here the supply chain manager is suggested to use the postponement strategy. What does postponement strategy? Postponement strategy is basically to postpone the product, to postpone the finalization of the product till it is being ordered. And why it is done? It is done to provide the customer with the customized or tailor-made service, so that he feels special and he feels much satisfied. Okay, so in order to gain the trust and satisfaction of the consumer, it is suggested that the satisfaction can be increased by providing the consumers with the customized product. So how can the products be customized? It can be done if the product is already, but is left for the last customization, okay, last touch up, so that the customers, they can feel the customization. And uh, okay, so it can be done until the closer to the until closer to the point of purchase. Okay, so closer to the point of purchase, it should be made, the product should be made ready, but it should be when it is closer to the point of purchase, then the customer should be able to customize that. Okay, and thus they can, the organization, they can create competitive advantage, and then gain the satisfaction of the consumer. Okay, so this is one another strategy that the organization can do to mitigate the risk. Okay, why mitigate the risk? Because you know that if the product is very standardized, then at times the consumer may not like the product, and that can lead to loss of the good, actually loss of the inventory, you know. The inventory may become obsolete, or may be not sold. Okay, so this way delaying the product can also mitigate the risk. Okay, so customization and delayed differentiation can be done. Next is reduce supply chain lead time. So the lead time may be reduced by using this JIT, just in time, and all these. So पोस्टपोनमेंट स्ट्रेटेजी भी जो है ना, उससे भी आप लीड टाइम कम कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पोस्टपोन कर रखे हो, देन व्हाट यू डू इज you you are ready with everything, but it is like the carrying cost is reduced, the lead time is also reduced, the holding cost is reduced. So all these can minimize the impact of demand uncertainty. So in any case, if there is demand uncertainty, so that can be mitigated, as you have not yet finalized the product, as the product is yet to be uh, finalized, and it is basically being postponed. So this way sorry, so this way the lead time can be reduced. So this is another strategy that is suggested to the supply chain manager to mitigate with the risk and uncertainty. The third is the tailoring sourcing strategy. Tailored sourcing strategy. Tailored, when the word is sourcing you are getting, that means sourcing means you are getting the good or services from the manufacturer. So that means we are talking about the raw material. So tailored sourcing strategy means it is talking about the raw material supplier. So what you can do is all the parties who are giving you, who are providing you the source, or all those parties who are in the upstream in the supply chain, in your supply chain, they are in the upstream. What you can do is you can build up a relationship with those suppliers.
Okay, you can build up a strategic relationship with those suppliers who are providing you the raw material. So what will happen if you build up a proper relationship? You can benefit in many ways. You can have a quality product, you can reduce the lead time, and you can also reduce the supply chain disruption, as you will be able to maintain a good relationship with the key suppliers. So it is suggested to the supply chain manager to have a good relations, to build up a strategic good relationship with its key suppliers or the raw material or the sourcing parties. Okay, so that all the risk related to the quality or all these things can be reduced. Okay, so it is similar to what was suggested in the first strategy, quick response strategy, the collaboration. Similarly, here they are saying to have a strategic supplier relationship. Okay, the next is risk diversification. So it is saying that the risk should be diversified. That means one single country should not be taken as a supplier. So because you know there are geopolitical risk, as and just now we have taken the example of Iran and Iraq, which are at the risk of war. So if your all the suppliers are from Iran and Iraq, then the whole your whole supply chain may be disrupted. Because there are geopolitical issues with those countries. So it is suggested that all the suppliers should not be from one country, should not be one supplier, because if there is any issue with one, then the whole supply chain will be disrupted. So it is suggested to diversify the risk related to this. Okay. Next is how can you mitigate this risk? So these were the three strategies that are suggested: quick response strategy, postponement strategy, and tailored sourcing strategy. The last is how can you, what are the techniques to mitigate the risk? The first technique is supply chain visibility. You should build up the relationship with the supplier, and the supply chain visibility. Visibility means there is transparency. How can transparency be increased? Transparency can be increased with the help of blockchain or AI technologies. If you are using data analytics in your organization, in your supply chain, then the visibility or the transparency can be increased. And if there is an increase in the transparency, then the risk uh, mm, the risk related to the supply chain, related to the supplier, or related to those risks, uncertainty and all, can be mitigated. So you can utilize advanced technology such as IoT, blockchain, and real-time analytics to enable end-to-end visibility, and also enable time risk identification, assessment, and response. Okay. Next, what technique you can apply to mitigate the risk is resilience planning. Resilience planning means to have a alternate plan. Okay, to have alternate plans means to have an alternate suppliers, like to have an, you should not depend on only on one supplier. You should have a substitute suppliers, you should have a plan B also. You should have alternate sourcing strategies, so that the business continues even when there is any issue, or any there, if there is any unforeseen disruptions. Okay. Also, the regulatory compliance, it is suggested that all the regulatory compliances should be well maintained, will should be well complied, because if there is any issue with the regulatory compliance, then there is then there is interruption by the government, and that leads to bad reputation of the bad name of the company in the market. Therefore it is suggested that there should not be any issue with the regulatory compliance. All the regulatory compliance should be properly updated and maintained to mitigate any legal or regulatory risk in the future. So these are the techniques that can be applied to mitigate the risk. So this is all about unit number 3. If you have any issue, please ask. Otherwise, we'll be moving to unit 4. Ma'am, can you repeat the resilience planning? Resilience planning, it is just saying that the case we discussed ना, कि ईरान एंड इराक सारे सप्लायर्स जो आपके हैं, जो सोर्स, जो रॉ मटेरियल्स आप मंगा रहे थे, मान लो आप सारे ईरान और इराक से मंगा रहे थे, ठीक है, तो अभी जैसे वहां ये वॉर का ये चल रहा है ना, कंडीशन है, तो
इसके अगर अगर आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन के की सप्लायर्स जो थे वो ईरान और इराक के थे, अगर तो सारे सब की सप्लायर्स ईरान और इराक के थे और वहां युद्ध हो रही है, तो उस केस में आप वहां से फिर अगर वो सप्लाई नहीं कर पा रहे, देन योर होल ऑर्गेनाइजेशन, योर होल सप्लाई चेन विल बी डिस्टर्बटेड, है ना। लेकिन आपको रेजिलेंस प्लानिंग में क्या है ना कि आपके पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए। अगर ईरान और इराक नहीं सप्लाई कर पाया तो हु आर द अदर सप्लायर्स जो सप्लाई करेंगे, तो आपके पास हमेशा एक कंटीजेंसी प्लान होना चाहिए, आपके पास एक ऑल्टरनेट सोर्सिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ताकि बिजनेस कंटिन्यू रहे इवन व्हेन देयर इज अनफोर्सीन सिचुएशंस हैपनिंग, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अबाउट दिस Okay. इज अबाउट द रेजिलेंस प्लानिंग। हाँ, सॉरी। Okay, ma'am. Now understand. ओके ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 छोटा सा है, बट इज काफी मतलब इट इज पॉइंट वाइज ओनली। ओके, सो कैन आई Ma'am, मूव टू यूनिट 4? some of it, sorry, some of us don't have unit PPT of unit 3. हाँ, I have not shared. I guess I'll be sharing. I'll be sharing all the units. मतलब एक बार आज let us complete this, and this will be the last class for supply chain management. After that, I'll be just sharing you uh, all this one. And you can do one thing also. You can just take up my number. You can make a group on WhatsApp. Okay, so that if there is any issue, even after this class till the exam, we can be connected there, and I'll be sharing the PPTs and everything there also. Even I'll be sharing the PPTs with the admin also. They can share you, but still, if you want, then we can be connected there till the exam period at least. Okay, right? Yes, ma'am. Okay, so this is done. Unit number 4. So unit number 4 was the unit that we were discussing in our normal class. So unit number 4 is basically, I have shared the screen. Is it visible to you? No. No, ma'am. No. No, Okay. Is it visible now? Yes, ma'am. ठीक है. So unit number 4 is basically, it is all about the transportation. This was the unit that we were doing in our normal class. So this unit discusses about the transportation. So the first topic was about the modes of transportation and their performance characteristics. So modes of transportation, we discussed that there are many modes of transportation, like road transport is there, then railways are there, airlines are there, pipelines are there, space is there. So all these were the different modes of transportation available. And what are the performance characteristics? So we have used 5 parameters to basically compare all the modes of transportation. So we have discussed that if we talk about the cost, then the cost of the road transportation is almost moderate to high. It is basically depending on the distance, because the fuel is involved there, है ना। जितने दूर जाओगे उतना पेट्रोल लगेगा, है ना। That is the concept. If we talk about the speed, then speed is also like it depends on the traffic and all, है ना। Then if we talk about the flexibility, means yes, flexibility is there with the road transportation, as door to door delivery is possible. And if we talk about the capacity, then the capacity is almost like if you are using cars, then it will have a limited space, but if you are using trucks, then it will have a good space. If we talk about the environmental impact, then air and noise pollution is the issue with the road transportation, ठीक है। तो ये सब these were the 5 parameters that we use to compare each of the mode of transportation. So we have discussed the road, we discussed the rail transport, we discussed the air, we discussed water, we discussed the pipeline, we discussed the space transport. So these were the transport modes of transportation that we discussed, and the performance and their performance characteristics that was discussed. Okay, next we started with
Next, we discuss the designing of the transportation network. Okay, so how these transportations are being designed and how which are the networks that are being used. So we discussed that there are 4 to 5 networks that is there in our syllabus that we'll be discussing. The first is the grid network. Grid network is something like a grid is being made. I've shown you in the class that there are some grid like structure made. Okay, that there are some grid like structure made where there are many transports being used. So this may be this may be one transport that is being used, this may be the next one. Okay, so here in the grid network what happens ki there are transports which are parallel to the other, or there are transports which are perpendicular to the other. Okay, so this is basically a network that is being made for the transportation. तो logistic का ये part है कि जब network बनाते हैं तो this the network may be made in this way. Some organization they follow a grid network. Okay, because grid network में क्या होता है ना, connectivity बहुत high है. All the areas are being connected with one or the other mode of transportation. Okay, so even when उस area में अगर railway नहीं है, then the other mode of transportation is available. So grid network में ऐसा है ना कि it is grid like made so that none of the area is missed out and there is enough connectivity. Okay, and it is like the navigation is easier as it is like perpendicular and it is not made like web, it is rather made like a grid. ठीक है, web की तरह नहीं होता इधर उधर, it is made like a this one, made like a grid. So there are parallel lines and there are perpendicular lines. Okay, so the transports are almost, the mode of transports are almost in the parallel like structure or almost in the perpendicular to one another. So इस वजह से all the area in which this is being used is properly connected. There is high connectivity and there is redundancy and it is easier to navigate with the structured route. However, इसकी कमी क्या है, इसकी कमी है कि there is high congestion in central nodes and it can also lead to inefficient paths if not managed well. If it is not managed well then it can lead to inefficient paths. तो ये सारे जगह पर ना vehicles जो है available है, ये सारे जगह पे ढेर सारे modes of transportation available है to cover each part of the region. Okay, so this is what is known as grid network. Okay, grid network. The next is radical network. Radical routes में क्या होते हैं ना कि there is one central hub and from that hub यहाँ पर एक warehouse बनी हुई है and from that hub all the modes of transport are available. मतलब railways are also being connected from here itself, roads are also being connected from here itself, waterways भी यहीं से connected है, pipelines भी यहीं पे, मतलब all the modes of transportation are being connected from this central node only. ठीक है, तो इससे एक तो फायदा है कि आपको डायरेक्ट रूट मिल रहा है ना, डायरेक्ट रूट अवेलेबल है फ्रॉम द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, है ना, और ये this is efficient for basically for all the cities and regions with a dominant core. अगर कहीं पे बहुत ज्यादा ये मतलब dominant उस चीज का dominant, उस प्रोडक्ट का dominant core अगर वो स्पेस है, जैसे बेसिकली ये यूज होता है उसमें कोल एंड ऑयल में, तो कोल एंड ऑयल जो होते हैं कोल एंड ऑयल में, तो वो कोर एरिया जो उनके रहते हैं वहां पर उनका मेन सेंट्रल वेयर हाउस होता है एंड फ्रॉम दैट वेयर हाउस ऑल द रेडिकल नेटवर्क्स, ठीक है, ऑल द नेटवर्क्स आर कनेक्टेड. ठीक है, और ये नेटवर्क्स जो जैसे रहते हैं ना, तो ये बाहर की तरफ, जैसे ये रोड, जैसे ये रेलवे है, ठीक है, ये रोड वाला मोड है, ये पाइपलाइन है, ये वाटर हाउस है, वाटरवेज है, तो यहाँ से ये इस साइड मतलब बाहर की ओर टू द आउटर वर्ड्स, ठीक है, आउटर
के तरफ इनका जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल रहता है। तो इसका फायदा तो ये है कि दिस इज सिंपलर and direct routes are available, efficient for all those with a dominant core। बट इसका प्रॉब्लम ये है कि सेंट्रल हब को, मतलब सेंट्रल हब इनका एक है एंड देन देयर आर मेनी रूट्स अटैच्ड टू इट। सो वन सेंट्रल हब पे, उस सेंट्रल हब पे काफी कंजेशन हो जाता है, क्योंकि दैट सेंट्रल हब इज मैनेजिंग विद द वाटर, विद द रेलवेज, विद द रोड्स। आप समझ पा रहे हो? तो ये इशू है। और दूसरी बात ये है कि जो पेरिफेरल एरिया, जो आसपास के एरिया हैं जिसमें ये सारे मान लो अवेलेबल नहीं है, रूट्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर उन एरियाज को, मान लो कोई एरिया यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ कोई रूट अवेलेबल नहीं है, तो इस एरिया को ना वो प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो पेरिफेरल एरियाज जो रहते हैं ना वो लेस एक्सेसिबल होते हैं और उनके पास रूट्स अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो रेडिकल नेटवर्क का ये इश्यू है, ठीक है। नेक्स्ट इज हब एंड स्पोक नेटवर्क। हब एंड स्पोक नेटवर्क में क्या है कि इसमें भी सेम होता है कि इसमें क्या है ना, एक हब है ना, एक जगह पे इनका हब है जहां पे वी हैव दिस सेंट्रल हब बोल लो या वेयर हाउस बोल लो इज अवेलेबल एंड आर कनेक्टेड टू पेरिफेरल नोड्स। इसमें क्या है कि जैसे स्पोक होता है ना, साइकिल का जो स्पोक होता है, जो व्हील होता है, उसमें जो वो जो 24 वो जो लगे रहते हैं उसको स्पोक्स कहते हैं, ठीक है। जो साइकिल के अंदर वो होते हैं ना, व्हील के अंदर में ऐसे ऐसे करके ये जो रहते हैं ये स्पोक्स होते हैं, ठीक है। तो हब एंड स्पोक नेटवर्क जो बनता है वो भी कुछ ऐसा सा होता है कि देयर इज वन सेंट्रल हब एंड फ्रॉम दैट हब देयर आर मेनी स्पोक्स जो आपका ऐसे निकला रहेगा, है ना। वन में बी रोड, वन में बी रेलवे, वन में बी वाटरवेज, वन में बी पाइपलाइन। तो इस तरह करके ढेर सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इस सेंट्रल हब से रिलेट होके ये बन रहे हैं। बट इज देन ये जो स्पोक्स होते हैं ना, ये इतने सारे होते हैं ना दैट इट कवर्स ऑल द एरियाज in its nearby। Okay, so it covers all the area in its nearby and is they are being covered, मतलब सारा एरिया कवर्ड हो जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल हब्स आर कनेक्टेड टू पेरिफेरल नोड्स, मतलब पेरिफेरल मतलब आसपास के जितने एरियाज रहते हैं सारे को कवर करता है, सारे को एक दूसरे के नोड से कवर करता है एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज हब एंड स्पोक नेटवर्क। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है कि इट इज एफिशिएंट फॉर एयर एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो मतलब कि जैसे एयर एंड फ्रेट में क्या होता है ना कि एयर के लिए भी यू नीड सम लाइक सम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू लाइक कनेक्ट इट विद द एयरवेज। वाटरवेज के लिए भी है कि आपको यहाँ से लेके हब से लेके वाटर तक पहुंचाना है, तो मतलब इट इज रिक्वायर्ड। तो उस केस में ये बहुत बेनिफिशियल है। एंड इसका और एक बेनिफिट वही है सेम जो इसमें था, रेडिकल वाले में था, कि कंसंट्रेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एट की हब्स। मतलब आपको जो वेयर हाउस बनाना है, जो करना है, वो कोर एक एरिया में करना है ना। तो ये एक बेनिफिट है। हाउएवर इसका चैलेंज है कि there are imbalanced travel time across spokes, so all spokes are not equally like यहाँ जो रोड है, ये जो रेलवेज है, ये सारे को सेम टाइम पे तो डिलीवरी नहीं हो पाएगी। रीजन बीइंग these modes of transportation have their imbalanced times, है ना। imbalance मतलब they have different travel times, right? Also depending on one, like यहाँ से लेके let it be road and let this be airlines, तो यहाँ से अगर यहाँ पे पहुंचाना है तो means there should be coordination in between, so if there is any issue with one of the mode then the other mode may be affected, ठीक है। तो हब एंड स्पोक में यही है कि एक दूसरे से जो ये कनेक्ट हो रहा है ना, इस वजह से क्या है कि if there is any issue with one then the other may be affected, है ना। हालांकि ये है बहुत अच्छा बिकॉज दिस कनेक्ट्स ऑल द नियरबाई एरियाज, है ना, and is also very efficient for basically the air and freight transportation. So this is all about hub and spoke network. The next is ring network. ring network काफी simple है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें यही है कि आपका ना सर्कल वाइज एरिया कवर होता है, like the these Flipkarts and all they use the ring network only। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले क्या होता है कि आपका एक एरिया, सेंट्रल एरिया कवर होगा,
ठीक है, then the nearby area is being covered, then the region, then the district, then the city, then the country, then the whole geography. तो इस तरह करके कवर होता है. तो circular routes encircling an area with radical routes inside and outside are being covered. ठीक है, तो circumvents, इसमें फायदा ये है कि circumvent central congestion को वो ले लेता है, ऐसे ऐसे करके वो कवर करता है. It offers alternative routes between radical points. Okay, यहाँ के लिए अलग है, यहाँ के लिए रूट्स अलग रहेंगे. ओके, तो हाउएवर कॉम्प्लेक्स प्लानिंग फॉर इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन करवाना है फिर तो कॉम्प्लेक्स प्लानिंग करनी होती है बिकॉज दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड. ओके, पोटेंशियल अंडर यूटिलाइजेशन इन लो डेंसिटी एरियाज. ठीक है, सो दिस इज द चैलेंज.